आप देखेंगे ना नीचे। So, hello everyone. I warmly welcome you all on behalf of WIRC in today's virtual series of internal audit, compliance series of internal audit. So, it gives me immense pleasure to have this series jointly with IIA Bombay chapter. So, before embarking on today's session, may I request our back office to play our ICI motto song, please? य एष सुप्तेषु जागृति य एष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रदब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता। Thank you. So, friends, this internal audit compliance series, which is a collaborative initiative of WIRC and IIA Bombay chapter, reflects the commitment towards strengthening the internal audit profession and equipping professionals with practical insights on evolving compliance and governance framework. So, today we are starting with new labor code, and for that, we have our learned faculty, CA Pranay Bafna. Again, sincere gratitude to our chairman, Dynamic CA Saurabh Ajmera. We are awaiting his presence. Secretary CA Bishan Shah, Treasurer CA Rakesh Shah, and all the regional council colleagues for giving me the opportunity to again chair this important committee of internal audit and management accounting. So, with this, we are delighted to welcome CA Pooja Nareva from IIA Bombay chapter. May I request Pooja to address us? Over to you, Pooja. Thank you, Jinal, and it gives me really immense pleasure representing IIA Bombay chapter here and seeing the series of webinar in collaboration with WIRC. I think this is an uh, amazing thing to see how professions and the two big institutions coming together, collaborating for the benefit of the professionals. So uh, I think as you were speaking, Jinal, I started feeling that aspect. And as we see compliance, every one of us, are required to understand what compliances are applicable and what are the new amendments or anything which comes up. To stay updated is also equally important. Given that we are having a series of 10 different webinar sessions going ahead, in this entire webinar series. Each one of them is so important and so well carved out. So, first of all, I would like to express my gratitude to the entire team at IIA and WIRC. So, thank you, Jinal, for always, being there at one call and getting everything planned so smoothly. Bishanji, Rakeshji, Saurabhji, thank you for your support. I think it's amazing to see that the entire team works in collaboration. And from our side, I think we are always incomplete if Satish ji is not around us in the call. So thank you, Satish ji, and our learned speaker for today, because it's your time which helps us to drive through these learnings that we are planning for each one of us. So looking forward for a great learning session. And as we talk about today's session, the new labor codes, I think
कुछ महीनों से यही दिमाग में चलता है whenever we talk about planning the audit calendar for this 26-27. Every time this was one important subject, and I think it's much beyond the theoretical aspect. It is something which is going to make the organizations realize that how to look at the workforce, not just from the compliance angle but maybe looking beyond that. Certain organizations might have to relook at their policies. It can go beyond just the payroll sheet. So I think having that session as today will definitely help us enrich our knowledge, and I look forward for this learning session today. Thank you, everyone. Expressing my gratitude to each one of the participants here. Looking forward. Thank you, Jinal. Yes, thank you, Pooja. As rightly said by Pooja, this is in fact third series that we are having jointly with II Bombay chapter. We had industry specific series, we had function specific series, and now this is compliance series. And we are also planning to have internal audit national conference hosted by WIRC on 10th and 11th of July. So we are looking forward for your active participation in that as well. And as rightly said by her, the changing regulatory landscape not only demands the technical understanding, but also our proactive preparedness from the business and assurance side. So, with this, may I request Secretary of WIRC, CA Bishan sir, to come forward and address us. So first of all, thank you very much, Jinal Madam, and my compliments to you as a chairman of this committee for making such type of purposeful, meaningful, and of course, impactful series for the members, where member appreciate across the region this type of series. So my compliments to you. Our most respected, humble chairman of the WRC, CS Saurabh Ajmera ji, who always believe in inclusiveness, empowerment, and he is a visionary chairman who makes all of us to do better and better for the profession. As this is the 75th year of the WRC, and we all are 75th secretary, treasurer, vice chairman, and of course the chairman, because we all believe in inclusiveness, and we all whole council members and membership feels that we are the part of this remarkable 75th year. So yes, we need to do with the important action, and in this collaborative approach we have a support of CA Pooja ji and blessings of, I can say, CA Satish sir, who is always there to help and think for the membership, how we all can flourish and being impactful, because this type of series is always required. And since this is also included for not a sector specific but a law specific, that is what are the interplay with internal audit function in the organization. And we are so much grateful that we are having faculties who wants to share their knowledge. And many thanks to CA Pranay Bafna ji for coming forward, and you are the opening best batsman, I can say, of this series, and members particularly who have joined in a large number. Of course, the support of our learned and experienced treasurer, sir, C. Rakesh Shah, is always there, and vice chairman, who was also past vice chair, immediate past vice chairman, CA Piyush Chandak ji, and is a vice chairman of this committee as well. So ably supported by him in this endeavor of the WRC. So my best compliments, and let us try to have more and more such type of initiatives under your leadership, Jinal ma'am. Again, congratulations, and we welcome all the members and all the ideas for the collaborative approach and how we can help members for transformation as well. Thank you. Jai Hind, Jai ICI. Thank you so much, Bishan Bhai. Friends, it's now time for introduction of our today's learned faculty for delivering the session, which is again of significant importance for all the organizations, management, HR functions. So with this, may I request Satish Gupta ji to come forward and introduce our today's learned speaker.
in an innovative way. And may I request back office team to also present a virtual certificate thereafter. So over to you, Satish ji. Thank you, Jinal madam. So, friends, today the topic itself is a very relevant topic, and that the topic is very is the flavor of the season, right? With the introduction of the labor codes on November 2025, it is now made effective. And there are huge changes also, right? Their penalties are been double. I think that is a motive for the compliance, right? The inspectors are now becomes the facilitators. They are not just remain they are not just to remain there to penalize the things. First, they have to guide, and then on the cert, if it the repetitions aspects is there, then only they have to penalize the impacts on the financials, right? I think quarter 3 was every financial listed companies have taken that hit because of the change in definitions. And most important, the statutory dues, which are the PF, ESIC, PT, TDS, gratuity, maternity. These are something whose defaults or could impact at, at board level. Directors are directly exposed towards the non-compliance of the. So all this will be deliberated by none other than to deliberate more and on this. We have a Durandar speaker with us, ये Pranay Bafna ji and Pranay ji के बारे में the moment I look at him and his charm, right? So प्रणय जी मुझे एक चीज बहुत अच्छे से याद आ रही है कि करें सीधी बात और चेहरे पे हमेशा जिनके है मुस्कान। आज ऐसे प्रणय बाफना जी हमारे हैं सेशन की शान। Thank you, sir. Thank you, sir. और इसके साथ में प्रणय जी का प्रोफेशनल परिचय भी देना चाह रहा था। काइंडली पुट फ्लैश दैट सर introduction, and by the time it will come again that on screen, Jinal madam and Pooja madam is here. So कठिन मार्गों में भी सुहाना सफर लगता है, जिनल मैडम। कठिन Yes, मार्ग, yes. this is the season 3, I would say, the collaboration, right, of between the IIA and ICA। तो कठिन मार्गों में भी सुहाना सफर लगता है, ये कुछ और नहीं, ICA ICAI और IIA के गाइडेंस का असर लगता है। सो कठिन मार्गों में भी सुहाना सफर लगता है, और ये कुछ और नहीं, ICAI और IIA के गाइडेंस का असर लगता है। सो Thank you, Satish ji. Thank you so much. So, friends, we have our treasurer CA Rakesh Shah sir also. So, may I request Rakesh sir to present? And also, there is an appeal from our regional council colleague Piyush Bhai to join our SRC held in Goa, that is sub regional conference. Thank you, General Ma'am, for this opportunity. First of all, thank you to you for this the interesting program on internal audit. I know it's running for next 2 months, and all the topics are very relevant and interesting. So many congratulations for this. Some of the important program which is coming up under the Mr. Saurabh Ajmera's leadership is Director's Refresher Course, which again happening from 19th and 20th June as well as 25th and 26th June at very convenient venue, Yogi Sabhagra, which is very convenient for most of the people, which is because it's the heart of the city. So request everyone to take the benefit of that. Other important program which we just concluded last week is Global Capability Center. There was a conclave on that, which again under the new leadership, all the programs are very unique and very different, and that's one of the milestone program we just concluded. In that same series, the number of interesting program is coming. There's a India Summit on Startups, which is coming on 26th, 27th of June. Then there is also conference of merger acquisition and the business restructuring, which is lined up on 20th of June. So my request to everyone to participate in this program and have a happy learning. So back to you, Jinal ma'am. Thank you very much. Thank you so much, Rakesh Bhai.
So, Piyush bhai, are you there? You just Yes, for ma'am. addressing. I'm there. I am there. Yes, yes, Piyush bhai. So thank you, Jinal madam, for the opportunity. First of all, I'll take this dais to congratulate Jinal madam and then the dynamic secretary present, Dishan bhai, and also Rakesh bhai, and our leader WIRC this year, CA Saurabh Ajmera ji, for having this wonderful program. I remember the efforts put in by Jinal madam and then again Pooja and Satish ji are like important for this program. I'll just take this opportunity to appeal the members present in this program that under the leadership of our chairman, our Goa branch of WIRC is hosting a sub-regional conference. And for this year, for the first time, this Goa branch is having residential seats also for the members outside Goa. And so that members can interact with the Goa local members over there and also can have the 12 CP hours. And the subjects are like taxation in detail, wherein CA Bimal Jain for GST and various other well-known faculties are going to deliver their sessions. So this is a wonderful opportunity to interact with Goa members and also to have a very wonderful seminar over there. And the fees for those seminars are very like reasonable due to the efforts of Goa members. Only 11,000 for 2 night stays. And I'll appeal all the members to just search their email. The conference is going to happen on 12th and 13th of June. I'm there to welcome you all. With this, thank you for this opportunity, Jill madam. Thank you very much. Over to you Thank again. you so much, Piyush bhai. So there is a query regarding the PPT and the recording of the session. So PPT for all the sessions will be shared with the permission of the speakers, and also the recording will be there on YouTube channel of WIRC. So we will have all it in our library. So rest assured. And so with this, may I request our today's learned speaker Pranay Bafna to come forward and take the charge of the session, and wishing everyone a very happy learning and looking forward for your active participation in our forthcoming national conference held on 10th and 11th of July for internal audit. Thank you so much. Over to you, Pranay. Yes. Is my screen visible? Yep. Yes, your Yes, screen is yes. visible, Fine. Pranay. Fine. So good evening to all of you, okay? And I know it's like Friday evening, okay, and you guys might be very much excited for the weekends, okay? So I will keep it very short and very interesting for you guys, okay? And we'll keep it very easy for you, okay? So basically, this labor code, okay, has been like they are planning to introduce it since 2020, okay? But effectively it came into, like, as you see, okay, it's a labor code 2019, 2020, 2020, 2020, but they are now like have made it, okay, done, like effective from 21st of November 2025, okay. So due to the manage admin compliances, okay, the proper offices like ESI, CPF, somewhere subject to like state act, somewhere subject to like central act, okay, somewhere run by central government, somewhere run by state government, but all there were roughly around 29 acts which got now subsumed into this new labor code, okay. So roughly around 29 acts are now being divided into four parts. The first is code on wages, okay. Second is industrial relations code. The third is social security code, and the fourth is OSH code. What does OSH code means? Okay, that is occupational safety and health. Okay, we will see line by line what does these acts means. Okay, what this code means. Okay, why it has become very important. Okay, so all those things we will see, and we will see what during the audits, internal audits, we have to check in. Okay, so that we give the correct reporting to the organization. Okay, so roughly around in code on wages, okay, there are roughly around there is the important acts. Okay, so roughly around, if I were to say, okay, every act has this code, every code has roughly around like 8 to 9 acts under it, okay, or the headers into it.
Like for example, Minimum Wages Act, payment of wages, bonus, equal remuneration. There are many others in this. Okay, but I'm due to the constraint of timing, I'm only able to highlight some important things that you need to check in. Okay, see, labor law ये एक ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा law है wherein, okay, there is no monthly compliances you have to do. Okay, it's purely on the basis of the records that you maintain. Okay, purely on the basis of any whistleblowing happening in the organization. Till then, there is no person coming directly into your organization and asking for the asking for the share the salary registered and all those things, until unless there is some complaint happening, or if the organization want to sumo moto carry out the audit into your organization. Okay, 99% times it is the whistleblowing that is happening in the organization. Okay, so roughly around there are like four codes. Okay, first is code on wages, second is industrial relations, third is social security, and the other is OSH, that is occupational safety and health. Okay, in code on wages, the minimum checklist for you to check in is like, okay, that is minimum wages. How, what is the minimum wages? How to determine that? Okay, how to check if the person is working for only 2 days, whether full wages should be given to him, what should be the what are the consequences of not giving. Okay, we all gonna see those things in a very detailed manner. Okay, so the main is minimum wages, payment of wages. Again, these both are different. Okay, payment of wages is different, minimum wages is different, bonus is different, equal remuneration. Okay, then industrial relations. Okay, these I think this can be least ignored thing we can keep into our today's discussion, because it is basically relating to trade unions and again, there are two three things wherein we have to also look into the points like retrenchment and layoff compensation, how those things to be given to the employees on the event of some layoffs happening, on the case of resignation, anything therein. Okay, strike, like we will see these 2 points therein. Okay, the important code, which comprises roughly around 70% of your actors like ESIC, EPFO, and maternity benefit. This will comprise 70%. Like major people are getting covered in this. Okay, like we can say every internal audit you are doing will have to comply with these three acts. Basically, in if I were to say, minimum wages also is being complied by each and every one. Okay, BOCW, what does this means? Okay, this is building construction workers के लिए एक act लाया है. There is like another act. I will explain the details, but I'm just giving an index of what we are going to discuss in this session. Okay. Then there is a safety standards, working hours, leave entitlements, welfare facility. Okay. आप एक चीज समझो कि लाइक जैसे ये देयर इज लाइक सेफ्टी स्टैंडर्ड, वर्किंग आवर्स, लीव एंटाइटलमेंट्स, वेलफेयर फैसिलिटीज. ओके, so if I were to say, what is the major issue the internal auditors face while doing the audit is like they're not aware कि उनको ये भी check करना है. This is the major issue. If they are able to check these things, I have prepared one 36 pointers का checklist. आप वो चीज को comply करो. It will hardly take you, depending upon the organization size. ये 36 checklists है. If you're carrying an audit, okay, you just follow this 36 checklist. ये 36 चेकलिस्ट में से अगर आप एक एक पॉइंटर को टिक करते जाओगे ना, तो यू विल गेट अ वेरी गुड क्लियरिटी. आई विल जस्ट शेयर ऑल दोस 36 पॉइंट्स वेरी सून, बट यू हैव टू फॉलो दोस चेकलिस्ट. बट वो चेकलिस्ट फॉलो करने के लिए वो चेकलिस्ट के जो पॉइंटर्स है, वी हैव टू कीप दैट थिंग्स इन माइंड. ओके, व्हाट इज मिनिमम वेजेस, what is payment of wages, what is bonus, किसको बोनस देना है, किसको नहीं देना है. If the company is in loss, still we have to give the bonus. Equal remuneration, if someone is like handicap and someone is like not handicap, okay, what should be the difference between the wages. Okay, if someone is a boy, someone is a girl, male female को same रहना चाहिए क्या. Okay, what if like if the person is working from office during the maternity period, okay, what happens. Okay, ओवरटाइम. ओके, सो आई हैव सीन मेजर पीपल. ओके, ओवरटाइम मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? ओवरटाइम इज बेसिकली यू आर पेइंग एक्स्ट्रा सैलरी फॉर दी आज ही इज वर्किंग. ओके, सो फॉर एग्जांपल, if he's working for 10 hours, we are paying him 30,000. Okay, if working for additional 10 hours, we are again paying him 30,000. Is that a legal law? Whether he is allowed to work overtime, how much working hours he should comply during a month. Okay, is there a provision ki there is one provision कि every 20 days an employee must be given an holiday.
for his mental health. Okay, but again, we are not complying with that thing. Lekin what happens is like employees ko chutti le lete. Okay, we have to look into those things in a very detailed manner and have to sort each and everything in a very like check each and everything in a very proper manner. Safety standard workings are, so this is like occupational safety and health. Okay, these are basically all these codes. Okay, are purely okay. Those are like certification. जैसे your fire safety है कि नहीं. Okay, your working place is sustainable or not. Okay, your working hours. Okay, that should be defined. Okay, leave entitlements अगर छुट्टी ले रहे हो तो whether those are as per the provision or not. Okay, welfare facilities. Okay, जैसे there is a facility you have to provide to the like if your organization, okay, is having 50 or more employees. Okay, and there are women's also in your organization, then you have to provide a facility for the kids playing area. अब कौन कंप्लाई करेगा? यहाँ पे हमारे कॉस्ट मेट्स नहीं होते हैं और दे आर टेलिंग टू कंप्लाई विथ ऑल दोस थिंग्स, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. आई नो दिस इज लाइक इफ आई वर टू टेल कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन में चेक करो, लाइक कोई 200-300 करोड़ की कंपनी है जिसका टर्नओवर 300-400 करोड़ रुपए है, उसको बोल दो कि आप एक रूम बना लो बच्चों को खेलने के लिए, जो भी एम्प्लॉयज है उनके स्टाफ के लिए, इट इज मैंडेटरी. विल ही डू दैट थिंग? वो बोलेगा जब आएगा तब देख लेंगे अपन. There is a practical problem also, there are like implementation problem. So all these things are becoming tough and tough. Okay, but again, I don't know when these laws will come into very seriousness, when this will become very practical. Okay, so to start with, okay, like there is an like main questions. Okay, like you should ask. Okay, are minimum wages? These are the basic questions. Let's like discuss one by one. Okay, so first of all, what you have to look into. Okay, you have to review. First of all, you have to check which act is getting applied to them. Okay, so for example, maternity act, if there are more than 10 employees, maternity is getting applicable. Okay, bonus act, if there are more than 10 employees, bonus is getting applicable. Like for example, ESIC, 20 employees getting applicable, PF, 10 employees getting applicable. Okay, so all these things we have to keep in mind. First of all, what you have to do, you have to list down the acts and you have to check whether this act is getting applied, yes or no. फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो एक चीज सबसे पहले कर लो कि जितनी एक्ट्स है, जैसे मेटर्निटी हो गया, बोनस एक्ट हो गया, पेमेंट एक्ट हो गया, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट हो गया, ये सारे एक पेज पे लिख लो. पेज पे लिखने के बाद यू जस्ट चेक what is the company's employee limit. Okay, and what is the company's turnover. Okay, and applying those things, we have to like apply those things to the individual acts. Okay, so for example, take ESIC, take PF. I have came into one case. Okay, लिस्टेड कंपनी है, आज तक ESIC रजिस्ट्रेशन नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है 30 साल से. इमेजिन, हुआ है ऐसा. एंड दे आर लाइक कि हम ESIC लेंगे नहीं. क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज दे वर टेलिंग कि लाइक ESIC जो है, हमने हमारा पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस निकाल रखा है एम्प्लॉयज के लिए एज अ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस. वी हैव टेकन दैट थिंग फ्रॉम दी लाइक HDFC से ले लिया हमने, एंड नाउ वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू, वी हैव ऑलरेडी कंप्लाइड. इज दैट अ वैलिड रीजन? अरे जो तुम्हारे यहाँ पे लाइक वर्कर्स आते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स लाइक योर ऑफिस बॉयज. ओके, पेंट्री स्टाफ हो गया. ओके, देन योर वॉचमैन्स. ओके, योर गार्ड्स. ओके, जो ड्राइवर्स है उनको भी तुम लाइक उनका हेल्थ इंश्योरेंस निकाले हो क्या? दे सेड नो. दिस इज अ मेजर मिसकम्प्लायंस. दे हैव पोर्ट्रेट टू दी ESIC कि हमने सबके लिए निकाला है, बट दीज वर द लैक्यूनास. ओके, ये उन्होंने उनके जो ग्राउंड वर्कर्स है उनके लिए कभी उन्होंने ESIC लिया ही नहीं. एंड देन वी रियलाइज कि इतनी बड़ी लिस्टेड कंपनी, उनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कौन है, एंड दे हैव लाइक नॉट इवन हाईलाइटेड दिस थिंग्स. और ESIC का और PF का तो एक इम्पोर्टेंट क्लॉज होता है तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में, एंड दे आर लाइक नहीं, पता नहीं. लाइक बट अगेन, इफ दिस आर गेटिंग फोकस्ड, ओके, आई वुड सजेस्ट इनकम टैक्स और GST दोनों को पीछे छोड़ सकता है लेबर लॉ रेवेन्यू कलेक्शंस के मामले में, if this laws are being implemented. So first of all, what you want to have to do is like list all the acts. Okay, and you have to tick on which act is getting applicable. Then the second thing is like, agar for example, if there is the ESIC act getting applicable, you have to check whether the registration is valid, uske license, uske filing, you have to check it. You have to check for the passwords and IDs, and you have to ask the access of those things. सो मैटरनिटी का एज सच कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इट्स ओनली कंप्लायंस वाला थिंग. ओके, बट अगेन मैटरनिटी का एक सर्टिफिकेट यू हैव टू टेक इट फॉर द इंटरनल पर्पस, एंड यू हैव टू सबमिट इट टू दी लोकल जो भी आपका लेबर लॉ ऑफिस होता है वहां पे सबमिट करना होता है. बट अगेन
people are like not doing these things, employers are not doing these things. They give on paper, but from the documentation perspective they are not complying with those things. A simple example, okay, GST सबको पता है, okay, a simple GST number not written on the office attracts a penalty of 10 to 50,000. ओके, अब आप बताओ, जीएसटी मेरे पास है, मेरे हर बिल पे जीएसटी है, बट मैंने सामने नाम नहीं लिखा तो मुझे जीएसटी का पेनल्टी लग गया. सेम इज द केस. ओके, मैटरनिटी का पूरा कंप्लाई कर रहे हो, आप बोनस दे रहे हो, आपने कभी उसके फॉर्म्स फिल करे हैं, आपने रेलेवेंट रजिस्टर्स मेंटेन करे हैं. अ सिंपल एग्जांपल यू हैव टू आस्क, सिंपल क्वेश्चन यू हैव टू आस्क द एम्प्लॉयर इज लाइक, yes, you have paid the maternity benefit, but was that being reported to the local labor office? Was that being reported in the return? Was that being reported in a very proper manner and documented? So you have to ask those things. Then what you have to do is like you have to examine payroll records for wages and deductions. Okay. Now the biggest definition. I will give you one simple example. मैं अभी एक जगह ऑडिट करने गया था. Okay. It was a decent organization. Okay. Strength of 600 plus employees. 600 employees. Okay. ठीक है. आई वॉज चेकिंग. अब ऑडिट करने के समय मैं तो सबसे पहले सैलरी रजिस्टर ही मांगता हूँ. ठीक है. अगेन लेबर लॉ का एक स्पेसिफिक, आई हैव एन असाइनमेंट विद दोस गाइस वेयरइन आई विल ओनली चेक वेदर द लेबर कंप्लायंसेस आर प्रॉपर और नॉट. ओके, अगेन यू कैन थिंक ऑफ दिस कैन बी अ न्यू सर्विस व्हिच यू कैन प्रोवाइड टू योर क्लाइंट्स. ओके, तो वेरइन व्हाट आई वाज डूइंग इज लाइक मैं उनका सिर्फ लेबर लॉ की कंप्लायंसेस चेक करता था. ठीक है. व्हाट दोस गाइस डिड, ओके, सो दोस गाइस वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ जो लाइक कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, वो उनके जो लेबर्स वगैरह होते हैं उनके मेनली 600 में से लाइक 400 एम्प्लॉयज तो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स ही थे, जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उनके. ठीक है. अ वेरी स्ट्रेंज ट्रेंड आई हैव सीन इनटू देयर सैलरी स्ट्रक्चर. आई वाज सीइंग उन्होंने क्या किया है, पीएफ और ईएसआईसी से बचने के लिए व्हाट दे डिड इज दैट बेसिक सैलरी 400 रुपीज, एचआरए 600 रुपीज, ओके, अदर फ्लेक्सिबल अलाउंसेस 8000 रुपीज. बेसिक सैलरी पे और एचआरए पे जो भी है उस पे लाइक बेसिक प्लस डीए पे उन्होंने पीएफ पे कर दिया था. इमेजिन व्हाट द स्ट्रेंज थिंग दे डिड. बोले सर हमने तो पूरा प्लान कर लिया है. बोले हम बेसिक इतना देते, हम अलाउंसेस बहुत देते बोले उनको महीने के. अ सिंपल थिंग आई आस्क्ड हिम. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द 33% रूल कि आपका बेसिक सैलरी शुड बी 33% ऑफ वॉट एवर अलाउंसेस यू आर पेइंग. Okay, so for example, if 100 rupees you are paying, 33% must be basic salary, which is now 50%. ये न्यू कोड में 50% हो गया है. तो 100 रुपए सैलरी दे रहे हो तो 50% शुड बी अ बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी मीन्स इट इंक्लूड्स डीए एंड जो भी इट इंक्लूड्स डीए. ठीक है. तो बेसिक सैलरी मस्ट बी 15%. आई टोल्ड हिम सबसे पहले तो आपने ये रूल को वॉयलेट किया है. सेकेंड रूल आपने जो वॉयलेट किया है वो वॉयलेट किया है मिनिमम वेजेस एक्ट का. अगर मैं 10,000 आपका बेसिक वेज निकालू, बेसिक वेजेस रफली अराउंड 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय 26 डेज, आपका बेसिक वेज जो सेक्शन 6 में नोटिफाइड बेसिक लिमिटेड वेजेस है उससे कंप्लाई नहीं कर रहा है. आप दोनों एक्ट के शिकार बन जाओगे अगर आपको कोई नोटिस आता है तो. देयर इज अ फ्लैट एंड ह्यूज पेनल्टी फॉर दिस थिंग. फिर सर बोले कैसे करना. अगेन देयर आर वेज वेयरइन वी कैन प्लान दोस थिंग्स बट दोज आर नॉट एन एडवाइजेबल वेज. ठीक है. तो ऐसे समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है, आप उनसे पूरा सैलरी रजिस्टर ले लो और समझ लो क्या ट्रेंड चल रहा है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज गिविंग, देयर इज आल्सो वन जजमेंट आई वाज गोइंग थ्रू, लाइक एक जजमेंट है व्हेन व्हाट हैपेंड इज लाइक व्हाट डिड ऑर्गेनाइजेशन डिड इज लाइक दे डिड अ 33% का क्राइटेरिया उन्होंने मैच किया. ओके. नाउ व्हाट डिड इज लाइक ओके जस्ट टू सेव पीएफ एंड ईएसआईसी they whatever is the like a senior software engineer having experience of 20 plus years, okay, is being given 15,000 salary और बाकी जो सब था he used to get other components. अब other components में he used to get HRA, other flexi allowances, travel allowance, leave allowance, and that was the pattern across the organization. अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन सेम पैटर्न था. अगर कोई दूर से आ रहा है तो भी उसको लीव अलाउंस. देयर इज एन ऑप्शन. ओके, सो यू कैन डिजाइन योर
pay. Okay, so when you join the big corporates, okay, so for example, if I'm joining Microsoft, okay, I have my like I can determine my own salary structure. तो मेरा बेसिक इतना रहना चाहिए, डीए इतना रहना चाहिए, एचआर इतना रहना चाहिए, मेरा लाइक अदर अलाउंसेस इतना रहना चाहिए, मेरा लीव अलाउंस इतना रहना चाहिए. I can decide my allowance. Okay, so those questions were asked to employees. It is the responsibility of the employees to tell their salary structure to the employer, and then employer keeping into the thing mind कि 50% basic रहना चाहिए, he can determine entire salary. 50% बेसिक रखो, बाकी वो कुछ भी डिटरमाइन करो. बट इफ दैट हैज नॉट बीन कंफर्म विद द एम्प्लॉय, देन द क्वेश्चंस वर आस्क्ड वेदर द सैलरी स्ट्रक्चर वाज डिजाइन्ड बाय यू और इट वाज बीइंग डिजाइन्ड बाय एम्प्लॉयर. तो उन्होंने बोला एम्प्लॉयर ने हमको तो पता ही नहीं है क्या देते हैं, हमको तो इतना पता है हमारी 35,000 सैलरी आती है. There was no sign on the, so if you were to submit those things onto the HR portal, you have to give the consent, whether it can be in an electronic form or it can be in a digital form or it can be in the paper form also. Okay, so when simple, that is a checklist I will come across. Okay, कि अगर आप पेरोल भी डिटरमाइन कर रहे हो, आपके बेसिक एचआरए ये सब भी डिटरमाइन कर रहे हो, so you have to keep in mind that is being approved by the employee. आपने कर लिया डिजाइन और उसके नीचे एम्प्लॉय की साइन ही नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा वो चीज. Irrespective whatever you are doing, the department will always catch you until you have done the evasion of taxes. Okay, so that is the point of we have to evaluate record maintenance and digital, and we never know कि ये भी चीज अपने को मेंटेन करना होता है. 99% सीएस डोंट नो कि जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सैलरी कंपोनेंट्स डिटरमाइन होते हैं वो सैलरी कंपोनेंट्स एम्प्लॉय डिटरमाइन करता है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलरी विच ही हैज बीन कम्युनिकेटेड. आप देखना ऑफर लेटर जब जाता है, ऑफर लेटर में अपने को साइन करना होता है और फिर बाद में आपके सैलरी कंपोनेंट्स यू हैव टू गिव इट इनटू द डिक्लेरेशंस. ओके, दैट इज 12BA, वो अपने को खुद को फिल करना होता है. ओके, यस. There are many questions coming. Okay, we will discuss that thing at the last. Okay, I know there can be many questions and it is not possible to cover all those questions. Okay, but I will try to explain all those things and the relevant questions which come up to me. Okay, yes, but I will try to answer all the questions at the end of the session. Okay. Now going to the other another thing is like inspect safety and welfare. Again, it is a whistleblowing thing. अगर कोई whistle blow करता है organization में, then we have to comply with this thing or else like we have to maintain the record. And like वो होता है ना like in I don't know what we call it in like Maharashtrian language or other language. Okay, so we call them as जवाई. Okay, तो वो जवाई जब घर पे आता है ना like उसके लाइक वाइफ के घर जब जाता है ना तो वो कुछ ना कुछ लेके जाता है. तो जब ये ऑफिसर्स आते हैं ना इंस्पेक्ट करने, ये जवाई के जैसे आते हैं, ये कुछ ना कुछ लेके जाएंगे. ओके, सो वो कुछ ना कुछ ना ले जाए उसके लिए अपन ने क्या क्या प्रिकॉशंस देने हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वी विल सी इन द इंस्पेक्ट सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स एट वर्क प्लेस. ओके, देन अगेन टेस्ट कंट्रीब्यूशन एक्यूरेसी. अब कंट्रीब्यूशन एक्यूरेसी मतलब आपको चेक करना है ईएसआई सीपीएफ और ग्रेचुइटी के प्रॉपर प्रोविजंस बदले हैं कि नहीं. देयर आर मेनी क्वेश्चंस कमिंग अराउंड कि ग्रेचुइटी तो सर अब 1 साल हो गया है, क्या 1 साल के बाद ही ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेचुइटी के प्रोविजंस करने पड़ेंगे? द मेजर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. इट इज नॉट दैट. ओके, इट इज ओनली फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्पररी वर्कर्स जो कि 1 साल के लिए काम करते हैं. यस, ठीक है. तो नाउ गोइंग अहेड. ओके, key audit questions you have to ask is like, are minimum wages as per code? You have to check the notification given by the government. Okay, under the minimum wages code you have to search section 6. वहां पे आपको हर स्टेट का कैटेगरी वाइज टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज वाइज स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड का आपको अलग अलग वेज पर मंथ मिल जाएगा विद द बाइफर्केशन ऑफ एचआरए, विद द बाइफर्केशन ऑफ बेसिक सैलरी, विद द बाइफर्केशन ऑफ डीए. ठीक है, तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि वो आपको आपके रेलेवेंट स्टेट, आप जो सिटी में हो उस हिसाब से चेक करके देना पड़ेगा. ठीक है, फ्लोर वेज आपको सारे वर्कर्स को अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है, गोइंग अहेड. ओके, नाउ डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट टैक्स जो मुझे लगते हैं कि मैंने आपको बताना चाहिए. ओके, आई एम जस्ट telling those things. Okay, then apart from that we will go for like this thing. Okay, we will go for the checklist wala thing. Okay, now what does minimum wages act is? Give me a minute. Okay, 1 minute दे दो. Okay, so what does minimum wages act is?
मिनिमम वेजेस एक्ट सेज कि आपको जो है फ्लोर वेज को कंप्लाई करना है. व्हाट डज फ्लोर वेज मीन? Floor wage is being notified by the government. Let me see if I have the notification of the एक आधा government का notification होगा तो I will just share it with you. Give me a minute. So for example, I'm sharing it for Maharashtra. Okay. So I've shared it for Maharashtra. Hope you're able to see it. I don't know. Okay. It's not able. I'm not able to switch the screens. Okay, but again, there's a notification you can check for. Okay, you can just type for the like minimum wages VDA notification. Okay, you will be able to see that thing. Wherein okay, आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी wages है. Okay, that is like you can search for any state. Okay, so in that there is like आपको notification होता है और उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपको बेसिक कितना देना है, एचआरए कितना देना है, वेरिएबल अलाउंसेस कितना देना है और टोटल पर डे कितना देना है. सो यू हैव टू कंप्लाई विद दिस थिंग्स. ओके, अब ये मिनिमम वेजेस कौन डिटरमाइन करता है? ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो डिटरमाइन करता है गवर्नमेंट नोटिफाई डिटरमाइन करता है. अब वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? वो डिटरमाइन करते हैं आपके लाइक कैलोरीज इनटेक पर मंथ एंड दिस इज बीन गिवन इन लॉ. अपन ने कभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है बट दिस इज बीन गिवन इन लॉ कि वो वेजेस कैसे डिटरमाइन होती है, कैलोरी इनटेक, उनको कपड़ा कितना लगता है साल भर का, एंड दे डू सम बैक वर्किंग एंड दे डिटरमाइन दिस इज द फ्लोर वेज एंड यू हैव टू कंप्लाई विद दिस फ्लोर वेज. ओके, दिस इज सेपरेट रेट्स फॉर ऑल स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड लाइक एचएसडी जो लाइक बेसिकली सेमी स्किल्ड काइंड ऑफ होते हैं वो आते हैं एचएसडी में. ठीक है, एंड देर इज दोज आर लाइक हरदम रिवाइज होते रहते हैं. एवरी क्वार्टरली दे रिलीज द रेट. ओके, तो अभी 1 जैन का रिलीज हो गया है. 1 जैन 26 के हिसाब से आपको रेट देना है एंड इफ देर इज एनी रेट हैपनिंग ओके सो यू हैव टू कंप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल इन जनवरी ओके they have given the rate as 100 rupee. Okay, now what happened is like the second notification was due to come in the month of um, April. Okay, and which came into the month of April. May में आया उनका notification. So they were supposed to give that revision in the month of April. तो वो अप्रैल से उनको वो रिवाइज रेट से कंप्लाई करना पड़ेगा. ओके, बोथ आर कवर्ड देयर. पर डे का होता है तो क्या होता है, देर आर सम थिंग्स. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पेमेंट उसमें ऐसा होता है कि लाइक अगर आपका ये रेट कंप्लाई नहीं हो रहा है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज नॉट कंप्लाइंग विद द मिनिमम वेज रेट. ओके, नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस. पेमेंट ऑफ वेजेस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे यू कैन लाइक find n number of queries into an organization. For example, if I joined an organization of on 31st of March, मैंने 31st of March को organization join किया है. So what people do is like, okay, they give the April month का salary और March month का salary together, which is not allowed as per law. Which period cannot be more than 1 month. The important checklist you have to keep into the mind before you are doing an audit. अगर वो बोलते हैं ना मैंने 15 दिन का दे दिया salary, but it cannot be more than 1 month. You have to keep in that thing in mind. एक मंथ से कम का चलेगा, एक मंथ से ज्यादा आप 31 या 32 या 31 रिस्पेक्टिव मंथ से ज्यादा आप सैलरी नहीं दे सकते हो. पेमेंट कैन बी डन बाय चेक, एनईएफटी, बैंक ट्रांसफर एंड शुड कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स. ओके, नो अनऑथराइज्ड डिडक्शंस like 50% of the wages. This is an important point. Okay, so what happens is like okay कोई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया. Okay, so for example it has given like 5 lakh का लोन दे दिया. Okay, and his salary is 1 lakh rupees per month. Okay, now what happens is like मैं बोलता हूँ कि अब जो है आप 5 लाख रुपए आपकी सैलरी है. These provisions are not known to the employer as well as employee, so it is very safe. नहीं तो हर पर्सन इसमें अटक जाएगा अगर कंप्लेंट हो जाती है तो. Okay, so what happens is like कि for example 5 लाख का लोन दिया था एम्प्लॉय को, and now what is happening is like employer wants to recover that loan
ओके एंड व्हाट डज एम्प्लॉय डू इज लाइक कि वो बोलता है कि अब मैं हर महीने के सैलरी में से आपका थोड़ा थोड़ा काटता हूँ, ठीक है. सो अगेन ही इज एन ऑथराइज टू कलेक्ट दैट थिंग, बट अगेन इट वाज आउट ऑफ द कोर्स. आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा था कि आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का आप लोन दे सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा था क्या? नो, इट वाज नॉट रिटन इनटू द एग्रीमेंट. ओके, नाउ इफ ही इज डिडक्टिंग दैट अमाउंट फ्रॉम सैलरी, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अनऑथराइज्ड डिडक्शन व्हिच शुड नॉट बी लाइक मोर देन 50% ऑफ द वेजेस. ये चीज ध्यान रखनी है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ इज गेटिंग 1 लाख रुपीज एज अ सैलरी, ओके, एंड इफ यू वांट टू डिडक्ट 80,000 या 1 लाख रुपए आप उसको दे ही नहीं रहे हो, सो दिस वोंट बी कंसिडर. ओके, इट इज अगेन इफ यू मेक्स अ कंप्लेंट देन यू आर लायबल टू गिव, और वो फेज वे में वो लोन कैंसिल होएगा. इट इज नॉट कि वो एक साथ आप 1 लाख रुपए उसका कट कर लो. दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. ओके, देन द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक फाइनल सेटलमेंट आपका 2 दिन में हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जिट irrespective whatever happening. So आप कभी भी चेक करना आपका FNF जो है, ठीक है, वो 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए. ओके, एंड सैलरी जो है वो सैलरी FNF के साथ हो जानी चाहिए. वेज स्लिप्स टू बी इशूड एंड मेंटेन. ओके, अगर आप सैलरी स्लिप सामने वाले को दे रहे हो, लाइक इफ द एम्प्लॉयर is giving salary slips to employee, he has to keep its copy in a digital manner or in the in the digital manner or in the hard manner. He can keep it anywhere. Okay, the most important thing here is like, okay, what happens when the wage period is every weekly. तो वीकली अगर आपका वेज पीरियड है तो व्हाट यू हैव टू चेक इज लाइक बिफोर द एंड ऑफ द वीक यू हैव टू गिव इट. Okay, so for example if somebody is working for the month of this for this week, for example Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, तो आपको उसके लास्ट वर्किंग डे पे ये वीक के उसको सैलरी यू हैव टू पे हिज सैलरी. इफ somebody is working for fortnight, okay, he is working fortnight, okay, so fortnight आपका पेमेंट ऑफ वेजेस हो रहा है like every 15 days, so you have to give the salary on 17th day. उसके पहले आपको देने, आप पहले दे सकते हो, यस यू कैन गिव इट before in hand you can give it. Okay, but you should not extend it if the salary is every fortnight. It cannot be extended for for the next month. Okay, you have to pay it within on 17th day itself. Okay, if the wage period is for the month, okay, the rule says you have to give by 7th of the next month the salary to the employee. These are the some basic rules, okay, you have to keep in mind. Okay, so for the daily wages workers you have to give daily. For weekly wages worker you have to give it on the last day of the week or last working day of the week. If the fortnight payment is happening, okay, you have to give it on the 17th day. If the payment is happening monthly, you have to give it by 7th of next month. So you have to keep this is an important checklist you have to keep in your mind. Okay, now speaking about the bonus. Okay, what is bonus? Bonus is basically like, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ. आपको लगता है कि बोनस इज समथिंग विच हैज टू बी गिवन आउट ऑफ लव, नेचुरल अफेक्शन टू द एम्प्लॉय. इट इज नॉट दैट. इट इज टू बी प्योरली गिवन आउट ऑफ द लॉ. ठीक है, so what does bonus act says is like, okay, if you are having more than 10 employees, bonus act is getting applied to you. Okay, now what happens, okay, bonus act किसको अप्लाई होता है? फॉर एग्जाम्पल any employee who is working for more than 30 days is liable for the bonus act. ऐसा नहीं है कि 5 साल का उसका वर्किंग पीरियड रहना चाहिए. देयर इज नथिंग काइंड ऑफ दैट. ओके, if he has worked more than 30 days in an accounting year basically means the financial year, basically means the tax year. Okay, if he has worked for more than 30 days, he will be liable for bonus of whatever is his salary ka 8.33%. Now what happens if the organization is in the loss? This is the major questions that has been seen into the like working environment. Okay, जैसे अभी हम एक स्टार्टअप का compliance कर रहे थे for labor law. Okay, उनका salary structure, payroll determination and all those things. Okay, and the startup was in the loss. अब बोनस देना या नहीं देना कट थ्रोट चल रहा है. Okay, so again, if the startup is at loss, okay, for the 5 years they have an safe side कि वो बोनस नहीं देना दे सकते हैं subject to they are at loss. Okay, again, for calculating that thing they have to add back the depreciation amount. जो भी depreciation वो income tax में claim कर रहे हैं उसको add back करना पड़ेगा. Then only we will calculate whether the organization is in loss or not in loss. Okay, so again, if the organization is in loss, okay,
For the first 5 years, like they will get the benefit, they are not required to give the bonus. Okay, for the next 2 years, okay, seventh year tak, this I'm talking about the startups only. For the 5 years, if they are at loss, they are not required to give the bonus. Okay, for the next 2 years, okay, that is sixth and seventh year, okay, if they have made the profit, they have to give the profit, or the irrespective if the loss is happening, okay, they are again supposed to give the minimum basic act, which will the government, that is 21,000 ka 8.33% they have to give. Okay, but if they are at profit, okay, they have to ensure that thing that, okay, कि like सिक्स और सेवेंथ ईयर्स में जो भी रिटेन्ड प्रॉफिट्स अगर ज्यादा हो जाते हैं फॉर फर्स्ट 5 years के लिए, ओके, दे हैव टू गिव दैट रिटेन, they have to like calculate on the pro rata basis for the first 5 years whatever was the bonus therein, and they have to pay that thing to the like sixth and seventh year mein bonus in the form of bonus. For example, I will give you a simple example. I know it is complicated to understand this thing. For first 5 years, what happened is like, okay, you like the organization was at loss. Now, what happened is like, okay, in the seventh and sixth and seventh year, they have incurred a super profit, super profit. अब उस समय they have an compulsory obligation for whatever bonuses they have missed for the first 5 years. They are liable to give that to the employees subject to the retained earnings. उनकी जो भी for that year retained earnings रहेगी उतना देना पड़ेगा. From 8th year onwards, irrespective you are in loss or profit, you have to compulsory give 8.33, which can extend up to, then if the employer wants, it can even extend up to 20% of your wages. Okay, so this is the bonus wala thing. Okay, now going ahead, okay, equal remuneration. There should be no gender discrimination. Equal wages should be given. Okay, you have to keep these things in mind. An employer cannot reduce wages to comply. Like they cannot reduce the wages to comply. So, for example, what does that mean? Is like I'm working at a salary of 85,000. Okay, another female is working in the organization which has a salary which. She has a salary of 80,000, and what they did is like, हम तेरे को नहीं क्या 5,000 रुपए कम दे रहे. They cannot do that thing just to match the equal remuneration. They have to like match the remuneration of the female. Okay, they have to give it 85,000. They cannot reduce the salary. Okay, maintain gender disaggregated payroll data, and they have to like maintain that segregated data, payroll data segregate करके उनको रखना पड़ेगा so that they can give that thing to the organization. One question is being asked: bonus percent on which salary? Bonus percent is on basic plus DA. Yes, बोनस जो होता है बेसिक प्लस डीए पे होता है. रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, जैसे मैं अभी चेकलिस्ट बताऊंगा तब उसमें आई विल क्लेरिफाई यू विच रजिस्टर्स, विच वेज स्लिप्स यू हैव टू मेंटेन, कितने साल तक यू हैव टू मेंटेन, व्हाट आर द ऑफेंसेस. वी विल सी लाइन बाय लाइन ऑल दिस थिंग्स. Trade union, I'm not focusing on this thing because we are running short of time. Okay, we will like, this is again like this can be an important thing, and we'll go with this. Okay, what is retrenchment? Okay, retrenchment and layoff. Okay, if any employee is getting laid off, okay, so first of all, government permission for retrenchment if the organization has 100 plus workers. There's a TCS ne kuch to be like last time they have like, in India it is not a scenario therein, but in the foreign cultures, okay, जैसे आप सुनते होगे Microsoft, okay, they are laying off 100 plus employees. They need to seek the permission from the government that key, and they have to convince to the government with the incurring cost. Okay, just for example, cost incurring has been exceeding for what the employees are giving in return. In that case only they can lay off the employees. Okay, the threshold has now been reduced, it has raised from 100 to 300, and but the notification is pending. Again, the code 2025 is also coming into the picture very soon. Okay, you have to give the 60 days ka retrenchment, and like retrenchment compensation of 15 days per year of service. Okay, so for example, if he has worked for like 10 years, so he would be getting 15 days. Okay, yes. Yes, 100 plus, it is 100 plus criteria. If the organization is having 100 plus workers, then they have to give the, they have to take the government permissions. Yes. Yeah. Now, this is the important thing you have to keep in mind for the retrenchment and layoff wala thing. Okay. Now, this is the important slide we have to keep in mind. Okay. First of all, ESIC. Okay. What does ESIC means is like, ESIC is a like health insurance which is being given by the government. Okay, whichever employee is having a salary of less than 21,000
is compulsory required to pay for the ESIC contribution. As I have given one example, कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने गया था जहाँ पे द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ वाज इट वाज अ लिस्टेड एंटिटी एंड लिस्टेड एंटिटी होने के कारण व्हाट हैपेंड इज लाइक ओके it was taking a health insurance, okay, but what about the employees who were at the like ground level, just a staff boy ho gaya, pantry boy ho gaya, okay, the drivers, okay, those guys were having a salary of 15,000-16,000 rupees, okay. Now what happened in that case is like okay, they were supposed to take the ESIC ka registration but they haven't taken. So anybody who is having a salary of 21,000 or 20 up to 21,000, they are liable to contribute, employer is liable to contribute to the ESIC. What if the salary is going, for example, I joined when my salary was 20,000. Now, over a period of 1 year, my salary has become 25,000. What would happen in that case? So, if my salary is going above 21,000, there is a provision you can ask for the employer to check therein. Okay, तो एक जो सैलरी रजिस्टर होता है उसमें आप ये चेक करो कि ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन किसका जा रहा है किसी का नहीं जा रहा है. ओके, so if the employee salary, my salary was 20,000, now it is 22,000. So I have to, there is a 6 monthly exit from ESIC. So it is better for the organization ki 100% they should like mark the exit because it is not compulsory to keep the employees if their salary is more than 21,000. Unnecessary compliance cost and those facilities are not very good which are provided by ESIC organization. So rather than contributing, क्योंकि आप imagine करो 21,000 rupees per month, which is 21,000 का 4% if I were to calculate, okay, it would be roughly around 1,000 rupees, okay. अब जिनका सैलरी 50,000 रुपए है, उनका 4% आप करोगे, which is 2,000 rupees. 2,000 rupees में तो आपको like आपको 8,000 rupees में बहुत अच्छा इंश्योरेंस मिल जाएगा थर्ड पार्टी का, which will include all the benefits and which will cover all the things, okay. So in that case, they have employees given that कि 21,000 is like basic exemption. इसके बाद अगर है तो it is not mandatory for the organization to deduct the SIC. और कर रहे हैं तो you should tell their employer कि नहीं आप ये मत करो. If you were to calculate 4% of the salary, if someone's salary is 30,000, 30,000 into 12 is 3,60,000 का 12% is roughly around आप 4% इज रफली अराउंड 18,000 रुपीज. 18,000 से 18,000 का आप उनका पर्सनल बाहर अच्छा इंश्योरेंस निकाल सकते हो. सो आज व्हेनेवर यू आर डूइंग द ऑडिट यू जस्ट चेक कि अगर 21,000 से ज्यादा सैलरी है तो इट इज बीइंग मार्क्ड एग्जिट इन द 6th मंथ. ओके, देयर आर ओनली 2 टाइम्स व्हेन यू कैन विड्रॉ दी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड अप्रैल. ये 2 महीनों में ही आप एम्प्लॉइज को बाहर निकाल सकते हो आउट ऑफ कवरेज. ओके, यू कैन नॉट रिमूव द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द आफ्टर द 6 months period. Okay, well, you have to remove in this 2 time periods only. Either you have to remove it into the month of December or the October or in the month of April. These are only the 2 dates wherein you can be removed. Okay, you have to keep this thing in mind. Yes, तो वो 4% जो है you have to contribute accordingly. Yeah. हाँ, वो है ना कि 30,000 क्वेश्चन पूछो, 30,000 के ऊपर सैलरी तो वो बाहर का ही इंश्योरेंस ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा ना. यू विल गेट अ वेरी गुड इंश्योरेंस. ओके, सो अगेन if you are doing that thing you just take the private third party insurance rather than going for this. Okay, now coming to EPF and ESIC. EPF and ESIC, see basic salary, okay, everything we are seeing is a part of basic salary. 21,000 जो है वो again it's a part of basic salary की सारा salary देखना है. In ESIC there is a separate definition, okay, which includes all the wages but does not include like आपका gratuity, leave encashment, ये जो compensation मिलता है ये include नहीं होता है. बाकी सारे compensation 21,000 के इसमें आ जाएगा. Now coming down to EPF and ESIC, EPF and EPS. Okay, now EPF is basically a employee provident fund. Okay, 12% of the employer and 12% of the employee's basic wage. Previously, there was a limit of 15,000. Any employee who is having a salary of more than 15,000, less than 15,000 is liable for PF. Okay. Now imagine a scenario. Okay. Me as an employee joined the organization. Okay. There was a mentality. Okay. 15,000 ka is a limit. Okay. There is a mentality which has been changed in the current law. Okay. Now PF and ESIC, PF is mandatory, not ESIC. PF is mandatory to each and every employee of the organization. This is the biggest amendment that has happened till date. What I'm telling is like, पहले क्या law था मैं बताता हूँ. My salary is 45,000 rupees. Okay. I joined the organization at 45,000 only.
सो आई एम नॉट लाइबल। मैं फॉर्म 11 में सबमिट कर देता हूँ, मेरा लाइक आई टेक एम्प्लॉय टेक अ फॉर्म 11 फ्रॉम मी और मुझे बोलता है कि आप ये सबमिट कर दो, तो एम्प्लॉयर मेरा पीएफ डिडक्ट नहीं करेगा। ओके, एम्प्लॉय का भी कॉस्ट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयर का कॉस्ट बच रहा है ना, एम्प्लॉयर का 1800 रुपए पर मंथ का बच रहा है। वाई ही विल नॉट डू दैट थिंग? तो उसने बोल दिया, उसने 11 नंबर फॉर्म साइन करवा लिया, बोले हम तेरे को जो सैलरी है तेरे सैलरी में से कुछ डिडक्ट नहीं करेंगे। सी, जिसका सैलरी 15,000 फॉर एग्जाम्पल, जिसका सैलरी 45,000 रुपीज है, उसका अगर 1800 रुपए डिडक्ट हो जाता है, इट्स अ मेजर कंपोनेंट। ओके, फॉर हिम इट्स अ मेजर कंपोनेंट, इट इज रफली अराउंड 5% ऑफ हिज सैलरी। अगर उसको बोल दे 45,000 आपका सैलरी है, माइनस 1800 पीएफ डिडक्ट होएगा, सो ही विल बी लाइक कि यार ये क्यों डिडक्ट कर रहे हो, रहने दो, मत करो। तो 45,000 पे वो एम्प्लॉयर भी खुश हो जाता है, एम्प्लॉय भी खुश हो जाता है, एम्प्लॉयर के 1800 बच गए और एम्प्लॉय को लगता है कि उसको 1800 ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो व्हाट हैज द चेंज happened is like, okay, now you are liable for, if the organization is having pf number, okay, he or she, whatever is the salary, irrespective, is liable for the pf amount. पहले होता था कि 45,000 रुपए सैलरी है, तो उसको एम्प्लॉयर पीएफ मत डिडक्ट करो, टेक फॉर्म 11 एंड कंप्लाई विथ ऑल दोस थिंग्स, बट अब ऐसा नहीं है। आई हैव सीन मेनी केसेस। वी वर डूइंग वन ऑफ द ऑडिट, ओके, सो इन दैट ऑडिट व्हाट हैपेंड इज लाइक, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस, अभी तो क्या है कंपलसरी कर दिया है, प्रीवियसली क्या होता था मैं वो बताता हूँ पहले आपको। एक ऑडिट कर रहे थे हम लोग, ओके, wherein there was an employee, okay, which joined at a salary of 19,000 rupees. Okay, तो अब those guys were, अब as a labor law expert, okay, those guys were having some questions, Q&A, employer were having, employees को कुछ Q&A था, तो वो Q&A में what we observed was, okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने, एक एम्प्लॉय था, वो बोले सर वो पुराने पीएफ का पैसा कैसे निकालना है, यहाँ पे तो मेरा पीएफ कट रहा नहीं है। बोले सर आपका यहाँ पे पीएफ क्यों नहीं कट रहा? बोले प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सैलरी 16,000, मेरा सैलरी 13,000 रुपए था, अब ये ऑर्गेनाइजेशन में मेरा 20,000 सैलरी है, तो एम्प्लॉयर ने बोला कि काटने की जरूरत नहीं है, 15,000 से ज्यादा सैलरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस थिंग। व्हाट वाज द प्रीवियस लॉ? इफ द एम्प्लॉय इज हैविंग पीएफ नंबर, employee is having PF number, then the employer, irrespective, his salary is 15,000, his salary is 1 CR, his salary is 2 CR, he is liable to deduct the PF if he is having PF number. पहले उसको रेजिग्नेशन मार्क करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन मार्क करके उसको उसका पीएफ नंबर कैंसिल करवाना पड़ेगा, पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके उसका पीएफ डिडक्ट नहीं होगा, वाज इन द प्रीवियस लॉ। नाउ इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पीएफ डिडक्ट करना मैंडेटरी है। Then the another thing is like 8.33 up to like 15,000 rupees, 8.33, there's an option you can contribute to NPS. Okay, if the salary is above 15,000, then again it's not mandatory, you contribute entire amount to the PF. Okay, so again 12% is the employer PF, okay, 12% is the employee PF। जो 12% of the employer share होता है, उसमें 8.33% is the going to pension and remaining goes to PF fund, and the remaining 12% of the employee goes to pure PF only. There is EPS, okay, so if I were to say EPF, okay, EPF में दो contribution होते हैं, एम्प्लॉयर, ठीक है, ये एम्प्लॉयर और ऊपर का एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% गोज इनटू पीएफ, ओके, एंड फॉर द एम्प्लॉयर 8.33 गोज टू ईपीएस, ओके। ईपीएस का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? देयर इज नो इंटरेस्ट बेनिफिट। अगर आज किसी ने 10 साल पहले उसमें 1800 300 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करे, आज भी उसकी वैल्यू 300 रहेगी। देयर इज नो इंक्रीमेंटल गेन। सो वेन एवर योर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एम्प्लॉय सैलरी 15,000 के ऊपर जाती है, टेल देम कि वो सैलरी जो है, व्हाट डिड दोस गाइज डू इज लाइक कि कंट्रीब्यूट एंटायर थिंग टू पीएफ। 12% पूरा पीएफ में कंट्रीब्यूट करने लो। डोंट मेक इट हैपन कि लाइक 8.33 is going to EPS, okay? Don't do these things, okay? Then apart from this, okay, you have to check whether the wages are being defined as per the law or not. Okay, 50% you have to keep into the mind, 50% of the total wages ka 50% must be basic wage, okay? The most important thing from this perspective, ESIC and EPF perspective, is like you have to keep an important thing in mind is like कि EPF और जो EPS है, दोनों में जो है one thing is common is like दोनों का रिटर्न 15th को जाता है।
And if you're complying it on 16th, okay, you won't get the deduction under the Income Tax Act. So that is the biggest law. ठीक है, तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको चेक करनी है कि आपका जो सैलरी हो पूरा जो कंट्रीब्यूशन और रिटर्न्स है, जो भी ईएसआईसी का रिटर्न होता है और ईएसआईसी या पीएफ का जो रिटर्न होता है, यू जस्ट इंश्योर कि उस पे जो रिटर्न फाइलिंग डेट है वो कंप्लाइड है कि नहीं प्रॉपर्ली. नाउ अनदर थिंग इज ग्रेचुटी. ओके, gratuity basically every person like who have continued his services for 5 years or plus, okay, will qualify for gratuity. और fixed term employees जो होते हैं उनके लिए it is like 1 year of service. अब what does that means? Okay, so for example मैंने कोई रास्ता बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने एक इंजीनियर को हायर किया है, ठीक है, और वो इंजीनियर को बोला है कि ये जो रास्ता बनेगा तब तक जो है तेरे को काम करना है, उसके बाद जो है यू आर फ्री टू गो. ओके, एंड रास्ता मेरा फॉर्चुनेटली जो है 2 साल में बन जाता है. ओके, अब बताओ पीएफ लगेगा या नहीं लगेगा? पीएफ लग जाएगा, सब सॉरी ग्रेचुटी लग जाएगा, सब्जेक्ट टू ही इज क्वालिफाइंग द फिक्स टर्म एम्प्लॉय. ओके, एंड ही विल बी लायबल फॉर ग्रेचुटी इन दैट केस. सबसे वियर्ड प्रोविजंस लेके आए ये लोग. आई डोंट नो व्हाई, बट अगेन इफ यू आर अ फिक्स टर्म एम्प्लॉय यू विल बी लायबल फॉर ग्रेचुटी. अब ग्रेचुटी का कैलकुलेशन उन्होंने, चलो वो ग्रेचुटी का कैलकुलेशन तो उन्होंने अच्छा ही किया है, ठीक है, वो बोलते हैं कि ऐसा समझो कि उसका 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस है, उससे ग्रेचुटी अमाउंट निकालो और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स उसने सर्व किया है. जैसे इसने 2 साल सर्व किया है तो 2 साल का ग्रेचुटी दे दो. जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर 5 years जो भी फॉर्मूला है 15/26 इंटू बेसिक इंटू ईयर ऑफ सर्विस से उसका पूरा निकाल लो और उसको डिवाइड बाय 5 करके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का उतना ही सैलरी दो, 5 साल का पूरा मत दो. ओके, so this is basically the important amendment that has happened for gig and like fixed term employees. Gig workers basically means कि जो एक specific assignments के लिए होता है, ठीक है. Now maternity benefits. Okay, मेटर्निटी बेनिफिट्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को अप्लाई होता है जिनका जो है बेसिक एम्प्लॉइज जो है, देयर आर 10 और मोर एम्प्लॉइज, ओके, they are liable for the maternity benefits. Employees of those organizations are liable. Okay. Now, one important thing is like 26 weeks paid leave. What does that mean? 26 weeks paid leave means कि basically जो 6.5 months होता है उसमें पूरी छुट्टी देना कंपलसरी है. दैट इज ऑल्सो पेड लीव देना पड़ेगा, ठीक है. अनदर 12 weeks फॉर थर्ड चाइल्ड. ओके, फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के लिए उन्होंने 26 बोला है, थर्ड चाइल्ड के लिए उन्होंने 12 weeks बोला है. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज लाइक क्रीच फैसिलिटी. क्रीच फैसिलिटी मतलब क्या? क्रीच बेसिकली मीन्स कि आपके लाइक कोई भी फैक्ट्री है उसमें छोटे बच्चों के लिए एक प्ले एरिया बना लिया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्रीच. क्रीच फैसिलिटी इज मैंडेटरी. आप इमेजिन करो, अभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कर रहे थे, उनको बोला हमने आपको क्रीच फैसिलिटी एक बच्चों का प्ले एरिया बना के वहां पे बच्चों की खेलने की जगह बना दो. तो बोले सर पॉसिबल ही नहीं है. मैं बोला सर करना पड़ेगा ये चीज. बोले क्यों करना पड़ेगा? बोला सर लॉ है. तो बोले सर वो ऑफिसर आएगा जितने की क्रीच फैसिलिटी बनाऊंगा उतने ऑफिसर को मैं दे दूंगा. बोले मेरा ब्याज भी निकल जाएगा. ऐसे जवाब सुनने मिलता है. अब क्रीच फैसिलिटी मतलब क्या? वो बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बनाना है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 50+ एम्प्लॉइज है. वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अवेलेबल है क्या? यस, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल एंड नो टर्मिनेशन ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव्स irrespective whatever happening. Okay, so that is one important thing you have to keep in mind. Okay. No, that it is not 25,000. PF ka limit is 21,000, 15,000 only. It's not 25,000. ओके, यू वांट मी टू रिपीट द एग्जांपल ऑफ 25,000. ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. पहले क्या होता था, अगर मैं 15, मैं मेरा जो सैलरी है 25,000 का सैलरी है, ठीक है. अब मेरा 25,000 का सैलरी है तो मैंने अभी तक, मैं फ्रेशर हूँ, मैंने फ्रेश ज्वाइन किया है, मेरा 25,000 का सैलरी है. तो पुराना पीएफ लॉ क्या बोलता था कि अगर सैलरी मोर देन 15,000 है, इट इज एन एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन. एम्प्लॉय मतलब अगर वो फॉर्म 11 दे देता हूँ मैं लिख के एम्प्लॉयर को कि मेरा पीएफ मत काटो, तो मेरा पीएफ नहीं कटता था अगर मेरा सैलरी 15,000 के ऊपर है तो. ओके, एंड आई एम ज्वाइनिंग एज अ फ्रेशर. मी ज्वाइन फ्रेशर इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मेरा सैलरी कितना है 25,000 रुपए और मैंने अभी तक पीएफ नंबर लिया ही नहीं है, दैट इज यूएन नंबर मेरा नहीं है. ओके, सो अगेन आई एम नॉट लायबल फॉर
paying, like I will not be liable for PF. Okay, it is a win-win situation for the employer-employee. But as of now, it has become mandatory. That was I was saying to you guys. Okay, अब सैलरी कितना भी रहने दो, पीएफ जो है बेसिक 15,000 पे डिडक्ट करना है. दे हैव इंट्रोड्यूस दिस थिंग इनटू द एक्ट. ओके, अगर आप ये लेबर लॉ का एक नया, लाइक आई वुड सजेस्ट आप टैक्समैन से ये परचेज कर सकते हो, और उसमें क्लियरली मेंशन्ड है. ओके, इट्स लाइक अभी नया एडिशन आया है, 2026 का एडिशन आया है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि even if the salary is 25 lakh rupees, even if it is anything, okay, and if the employer is not having PF, he has to take the PF number and like deduct the PF on the minimum basic wage of 15,000, that is 1800 rupees per month. Okay. Yes. Now this is something like LDMS and building workers. Okay. Now what is this? Okay. Building and other construction workers, 1% cess on construction cost. ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को है, अप्लीकेबल है. इसके लिए एक सेपरेट सेशन रखना पड़ेगा मुझे. बट आप इतना समझो कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो उसका 1% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शुड बी गोइंग टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. ओके, जैसे अपने ये प्रोविजंस होते हैं ना, लाइक रिलेटिंग टू कंपनी का. ओके, लाइक यू हैव टू कंपनी के लिए you have to go into some do some welfare activities and like yes, do all those things. Similarly, the BOCW, it is like board construction workers के लिए you have to make up 1% cess on construction cost. It's a separately different thing, but I can explain these things in a very detailed manner to you in the checklist. जब checklist देखेंगे उसमें एक दो points important है, वो देखना है. Mainly construction workers के लिए है. ठीक है. मेन रिस्की एरियाज कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले रिस्की एरियाज है शॉर्ट पेइंग ईपीएफ ड्यू टू नैरो वेज डेफिनेशन. ओके, जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला था कि बेसिक वेज ही कम दिखा दी. ओके, अगर बेसिक वेज कम दिखा दी तो मिनिमम वेजेस एक्ट में आप अटक जाओगे. तो बेसिक वेज कभी कम नहीं दिखाना चाहिए. एक सिंपल सा रास्ता बताऊं मैं, अगर आपको एम्प्लॉयर का पीएफ बचाना है और वो मिनिमम वेजेस एक्ट को कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो अगेन दैट इज नॉट अ वे. ओके, बट इट्स अ वियर्ड थिंग. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हुआ क्या था, एक लाइक छोटा टाउन प्लेस है. टाउन प्लेस में इट कम्स अंडर कैटेगरी 3, जहां पे मिनिमम सैलरी 10,000 की बोली है. नाउ इमेजिन व्हाट इज द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी. मिनिमम वेज सैलरी वहां पे 10,000 रुपए बोला है. ठीक है, और वो एरिया में अकाउंटेंट की भी सैलरी जो है वो हार्डली 11,000 रुपए जा रही है. ठीक है, मतलब आप इमेजिन करो कोई एरिया है जहाँ पे इट्स अ वेरी बैकवर्ड एरिया, वो टायर 3 में आ जाता है, टीयर 3 में आ जाता है, और वहां पे जो बेसिक एग्जामेशन का वेज लिमिट है वो मानो 10,000 रुपए है. ठीक है, और वो एरिया में अगर वो टाइप का एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो हार्डली सैलरी 5,000 रुपए ही पे करते हैं. उससे ज्यादा है ही नहीं. अगर 10,000 रुपए पे कर दू तो उतना सैलरी अकाउंटेंट को है. वो अनस्किल्ड लेबर का सैलरी वहां पे 5-6 हजार रुपए, उससे ज्यादा है ही नहीं. प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, सर कोई पे ही नहीं कर रहा है और वो खुशी खुशी काम कर रहा है 5-6 हजार रुपए में, तो हम मिनिमम वेजेस एक्ट को क्यों कंप्लाई करें? बोला सर आप मत करो, लेकिन इट वुड बी अ रेड मार्क फॉर मी. सर बोले सोल्यूशन बताओ क्या करना चाहिए. आई नो इट्स नॉट अ वे, इट इज रिकॉर्डेड सेशन, आई नो इट शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड, लेकिन कंप्लायंसेस से बचने के लिए व्हाट वी कैन डू इज लाइक उसको बोलना कि भाई तू उसका अटेंडेंस रजिस्टर में 15 दिन की ही अटेंडेंस बता. टेंशन ही नहीं. सबसे बेस्ट वे अगर कोई क्वेरी वगैरह कुछ आता है तो. एंड प्रूविंग द एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ like present register उसको like again, but again if the whistle blowing happens then it is a serious issue. अभी एक क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन में whistle blowing हुआ मिनिमम वेजेस का, क्या करेगा? कुछ नहीं. अब सारे एम्प्लॉइज का वो पेनल्टी वगैरह चल रहा है, कोर्ट कचेरी चलते रहता है, एंड दिस आर बीइंग हैंडल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. उसके लिए वकील रखना पड़ता है एंड ऑल दोस थिंग्स. आप खुद हैंडल नहीं कर पाते हो ये चीज. इसके लिए फिर वही है, वकील वहां जहां जाता है, केस तारीख एंड ऑल दोस थिंग्स चलते रहती है. तो कंप्लायंस पर्सपेक्टिव व्हाट थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड इज लाइक यू हैव टू कीप दिस थिंग्स माइंड कि लाइक मिनिमम वेजेस को कंप्लाई करें, एंड इज ऑफ द ओपिनियन कि वहां पे सैलरी उतना मीट नहीं हो रहा है, सो शो दी एब्सेंटी एंड कंप्लाई विद द मिनिमम वेजेस. दैट्स इट. ओवरऑल एम्प्लॉइज का फैसिलिटी 50 से ज्यादा रहना चाहिए, नॉट ओनली फीमेल. ओके, यस. नाउ व्हाट इज ओएसएच? occupational safety health and working conditions. again like this is a kind of आपको एक विसल ब्लोइंग होता नहीं है, इसमें कंप्लायंस पर्सपेक्टिव कुछ ज्यादा चीज नहीं है. विसल ब्लोइंग होता है तो इसमें दिक्कत होती है.
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 10+ वर्कर्स है तो फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई अप्लाई हो जाएंगे। ओएसएच वो थोड़ा आपको सेफ्टी एंड हेल्थ आपको लिखना पड़ेगा, इट्स अ हजार्डियस प्रोडक्ट, ओके, कंटेंट्स ये किप डिस्टेंट, ओके, ये सारे साइन बोर्ड्स लगाने पड़ेंगे। एक सेफ्टी ऑफिसर रखना पड़ेगा 1/100 वर्कर्स। सेफ्टी कमेटी रखनी पड़ेगी, उसमें एक कमेटी बनानी पड़ती है, ठीक है, कमेटी बना के उसमें एक लाइक व्हाट एवर इज द इश्यूज, ओके, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कमेटी में रखना पड़ता है। देन एक्सीडेंट रिपोर्टिंग टू अथॉरिटी विद इन 12 आवर्स। अगर अगर कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह होता है ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्रीज में, ओके, दे नीड टू बी रिपोर्टेड टू दी कंसर्न अथॉरिटी विद इन 12 आवर्स, ओके। 12 आवर्स ये जो है ये बेसिकली ईएसआईसी के केस में अगर क्लेम वगैरह करना है तो अगेन दैट हैज बीन द लिमिट्स हैज बीन चेंज्ड, ओके। सो दिस डिपेंड्स अपॉन स्टेट टू स्टेट कितने दिन में कितने समय में करना होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्किंग आवर्स। मैक्स वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। 48 आवर्स पर वीक। ओवर टाइम अगर होता है तो मैक्स 125 आवर्स पर क्वार्टर, इससे ज्यादा नहीं करना है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड, if the overtime is being paid, it should be paid 2 times the normal wages. Yeah. अगर आपके यहाँ पे like if the organization is paying overtime, so they have to maintain the logs and records of these things. So you have to just check if the salaries, if in the salaries head there is a provision of yes, very. ये वर्किंग आवर्स के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं क्या ऑफिसेस को? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट यू आर साइनिंग विद द एम्प्लॉयर, ओके, बट दिस इज द बेसिक रूल। व्हाट डज दैट सेज इज कि मैक्स 8 आवर्स पर डे, ओके, व्हिच एक्सक्लूड्स योर लंच ब्रेक एंड डिनर ब्रेक समथिंग, ओके। दिस 8 वर्किंग आवर्स इज बीइंग नोटिफाइड इनटू द एक्ट। अभी तक इस पे क्लैरिटी नहीं दिया है, ओके। सो दोज गाइज हैव नॉट येट गिवन द क्लैरिटी वेदर इट गोना बी एप्लीकेबल फॉर द गिग वर्कर्स, जो व्हाइट कलर जॉब्स है, ओके। दिस थिंग्स आर नॉट बीइंग नोटिफाइड येट, ओके, बाय द डिपार्टमेंट। कोड में उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है मैक्स 8 आवर्स पर डे। बेसिकली ये 8 आवर्स पर डे जो है ये फैक्ट्री वर्कर्स के लिए अप्लीकेबल कर रहे हैं वो लोग, ओके, एज ऑफ नाउ। बट आई डोंट नो वेदर दोस गाइस गोना एक्सटेंड देयर स्कोप टू दी white collar jobs or not, okay. But as of now you have to keep this thing in mind, this 8 hours per day is only for the factory workers, okay. And if you're paying an overtime, okay, overtime is basically twice the rate. Yes, twice the basic wage जो भी रहेगा उसका twice आपको pay करना mandatory है, okay. Then health and medical, अब वो first aid box रहना चाहिए, ambulance reachable रहना चाहिए, clean drinking water, these are the things, okay. This welfare facility में creche 50+ women workers, okay. Then creche facilities like you have to give it compulsory, okay. Sitting arrangements you have to give, okay. All these things are there, okay. Leave entitlement. Acha, this is an important thing, okay. For every 20 days you will be एक छुट्टी you are granted, okay. So for example, every month if the employee is working, okay, so he will be earning 1.5 days if he's coming all the days, okay. Questions में line by line end में clarify करता हूँ, okay. Give me some time. Okay, तो अगेन लीव एंटाइटलमेंट फॉर एवरी 20 डेज एक दिन का लीव आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ओके। सीक लीव एंड कैजुअल लीव एज पर द रूल्स जो होता है, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में होता है, दैट इज अ सेपरेट। लीव एनकैशमेंट का भी वो सेपरेट रहेगा। नाउ दिस इज द मेजर ऑडिट चेकलिस्ट। अभी तक जो देख रहे थे अपन ऐसे ही चीजें देख रहे थे, जनरल चीजें देख रहे थे। दिस इज द चेकलिस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। Now, what this says, minimum wages as per schedule employment notified by central government to all workers. Okay, how you have to check this thing? You have to verify the payroll register, wage salary, and the gadget notification of minimum wages. आप ये तीन चीजें employer को ही बोलो, he will arrange for you and he will guide you in a very proper manner. Okay, taking an example of similar thing. Okay, you have to keep that thing in mind. Okay, so for example, if there is a factory, okay, which pays 8,000 rupees per month, okay, which is like अगर मैं उसको divided by 30 करूँ, which is roughly around, okay, it is roughly around, if I were to calculate, okay, 8,000 divided by 30, roughly around 400 something आएगा, okay, no, 350 something आ जाएगा, okay, but if the wage rate there is
like 400, then again he has to comply with the minimum wages act therein. Okay. एंड फ्लोर वेज वगैरह जो है वो सारी चीजें नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी. सो यू हैव टू जस्ट चेक. ओके, अ सिंपल थिंग, यू हैव टू कैलकुलेट द वेजेस. ओके, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेजेस, ओके, यू हैव टू जस्ट अप्लाई वेदर दोज आर बीइंग मीट बाय द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. जो लोअर है आप फिल्टर लगा लो, फिल्टर लगाने के बाद जो मिनिमम वेजेस है उसको ऊपर टिक कर लो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड यू विल क्लैरिफाई दैट थिंग. इन दिस थिंग, इफ द एम्प्लॉय if the employee has worked only for 2 days, तो कैसे निकालना मिनिमम वेजेस? You have to calculate wage per day. Wage per day calculate करके you have to take into consideration. So you have to keep in mind what you have to do. Total wages divided by number of days into number of days he is present is उसका जो भी actual salary है वो, and number of days he is present into wages, floor wage, वो whichever is higher, okay, will be allowed. Okay, lower जो है lower है तो it should be a star mark for you कि floor wage से rate है तो वो you have to mark that thing. Okay, अब आपको उसका कंपैरिजन स्टेटमेंट बना के उनको सबमिट कर देना चाहिए. ओके, एज पर द इंटरनल, लाइक बीइंग एन इंटरनल ऑडिटर यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके, फ्लोर वेज इट्स नेशनली अप्लीकेबल. हर स्टेट का एक डिफरेंट वेज होता है. ओके, यू हैव टू गिव द कंपैरिजन ऑफ फ्लोर वेज एंड एक्चुअल वेजेस पेड. ओके, wages should be paid within time. I have already covered this thing. You have to check what you have to check. In this case, you have to check the bank transfer या फिर cash book check करो उनका कि salary कब पे हुआ है. Okay, so you have to keep that thing in mind. If the salaries, if the employee is on daily basis, okay, daily wages वाला है तो you have to pay it by the day end. If he is weekly wala, okay, you have to pay by the end of the week. If the fortnight payment is happening, you have to pay it by second day. And if the payment is happening monthly, 7th of the next month. Okay, you have to keep this thing in mind. Now, deductions from wages do not exceed 50% of total wages. You have to also keep in this thing in mind कि आपके जो other deductions है, okay, should not be like does not exceed 50%. You have to keep this simple thing in mind कि जो भी उसकी wages है, for example, if 1,000 rupees is his wage, okay, 50% should be basic wage and other things can be determined as per the employee itself. Okay, वो खुद free रहेगा वो design करने के लिए. Okay. This is the important thing, wage slip issued to workers before or on wage date. अभी एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, इट वाज अ ऑर्गेनाइजेशन वेर इन द लाइक इट वाज एजेंसी काइंड ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी था. उनको ऑडिट कर रहा था मैं. ओके, अगेन लेबर ऑडिट ओनली. ओके, उसमें पीएफ ईएसआईसी सारे कंपोनेंट्स चेक कर लिए, सारा प्रॉपर है, ठीक है. देन आई सिंपली आस्क्ड वन ऑफ दी लाइक वहां पे जो भी वर्कर्स थे, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कहीं पे जाते थे, आई आस्क्ड कि आप आपका सैलरी स्लिप बता सकते हो. ही सेड कि हमको सैलरी स्लिप इशू ही नहीं होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, you have to issue salary slip digitally or physically to the employee. तो आपको सैलरी रजिस्टर में सिर्फ ये नहीं चेक करना है कि सैलरी प्रॉपर पे हुई कि नहीं, whether the salary slip was being issued to the employee. You have to take this thing in mind. तो वेज स्लिप का एक रिकॉर्ड रखो या डिजिटली डिलीवर हुआ है कि नहीं ये चेक कर लो. या फिर rather than you can ask the employer कि आप सबका मेल आईडी लेके रख लो और उनको हर महीने जो है सैलरी स्लिप आपको भेजनी है, irrespective whatever happening. Okay, अब क्या है नहीं करते हैं तो आई नो नहीं करते हैं तो कुछ होता नहीं है लेकिन पेनल्टी है. दिस इज द कंप्लायंस. ओके, आई नो लाइक यू से कि सर बहुत सारे इवन ओके लाइक इवन द सीए फर्म्स लाइक आर नॉट इशूइंग एनी पे स्लिप्स टू दी लाइक एक जो मीडियम फर्म है. ओके, लाइक अ फर्म ऑफ रफली अराउंड लाइक 10-15 एम्प्लॉइज का भी फर्म अगर है, उसमें भी वेज स्लिप नहीं इशू होता है. ऑन दी पेपर इट इज बिंग डिटरमाइंड एंड नेवर द वेज स्लिप इज बिंग इशूड. ओके, so there are, you have to follow this organization's procedures. Okay, yes, so you have to keep that thing in mind कि wage अगर दे रहे हो तो you must issue a salary slip and you must have a record of that salary slip as well as employee must be acknowledged with that salary slip. Okay, annual bonus paid must be. अब अगर आप बोलोगे कि कितने सारे हेडेक्स हैं. अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जिसका एक डिसेंट कंपनी साइज मतलब 500 करोड़ वाली जो कंपनी है, अगर वो ये सब कंप्लाई करते बैठे ना तो उसका बहुत हेडेक बढ़ जाता है. फिर
It is not practically possible. I know this is theoretical things, okay? Imagine a construction contracting company, okay? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग की कोई कंपनी है जो सिर्फ क्या करती है, लेबर्स हायर करके देती है. एवरी थर्ड डे देयर इज अ न्यू एम्प्लॉयर कमिंग. तो मुझे बताओ, और टर्नओवर इज वेरी हाई. आज वो ए बिल्डिंग पे काम करेगा, कल वो दूसरे दूसरे वर्कर के पास चले जाएगा. अब उसके लिए ईएसआईसी और पीएफ सब लेना पड़ेगा. इमेजिन करो कितना टफ चीज है ये. अगेन, अब कॉन्ट्रैक्टर्स की केस में तो उन्होंने बोल दिया कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर विल बी लायबल अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं भर रहा है. So XYZ person, I will give a very interesting case law which I am dealing with as of now. Okay, मैं आपको एंड में बताऊंगा वो चीज. When 10-15 minutes will be left, मैं बताऊंगा. It is an interesting thing. आप बताओ, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. I will communicate all those things. Okay, not really. Annual bonus paid must be 8.33 to 20%. अब व्हाट डज दिस मींस इज लाइक कि आपका मैक्स आप 20% रख सकते हो, मिनिमम आपको 8.33% पे करना है. देन यू हैव टू चेक दैट थिंग. हाउ यू हैव टू चेक दैट थिंग? यू हैव टू चेक द सैलरी रजिस्टर कि उसमें बोनस वाले कंपोनेंट कितने हैं. बोर्ड रिजोल्यूशन और कंप्यूटेशन शीट भी चेक करनी पड़ेगी वेदर द कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट्स और नॉट. ओके. इक्वल पेजेस पेड, ये तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा. अगेन यू हैव टू कीप द सेग्रीगेटेड डेटा, ओके, of the payroll gender wise, so it becomes very easy. And job classification wise also, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, सीनियर है, जूनियर है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, यू हैव टू कीप ऑल दोस थिंग्स इन माइंड. ओके. रजिस्टर ऑफ वेजेस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रजिस्टर ऑफ वेजेस मेंटेन करना है अलॉन्ग विद द सैलरी स्लिप्स इफ इट इशूड इन फिजिकल मैनर. इफ इट इज इशूड इन डिजिटल मैनर, डिजिटल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा. और कितने साल के लिए? यू हैव टू कीप इट फॉर 3 years. सो व्हाटएवर, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एनालिसिस ऑफ सैलरी, यू जस्ट आस्क देम कि हमको वो like give us the data of 3 years and check whether those guys are having those data or not. Okay, irrespective. Full and final settlement within 2 working days for the terminated and resigned employees. Okay, so you have to check what is the exits that has happened. Okay, and you have to check whether within 2 days the final full and final settlement has been done. I know no one is following this, but again, you have to follow this. ट्रेड यूनियंस, अगेन अब इसमें प्रॉब्लम कब होगा सर, ये कौन वेरीफाई करेगा? अगेन विसल ब्लोइंग होता है तो इशू है, अदरवाइज देयर इज नो इशू. Okay, trade unions. Okay, so what happens is like there are big companies, okay, in which there are some trade unions, okay, happening. Okay, तो वो trade unions के registration certificates वगैरह आप check कर सकते हो. But again, this is not very compliant thing. Okay, ये whistle blowing वाली thing है again. Now the ESIC registration and monthly contribution, you have to check whether these things are matching or not. What you have to check: ESIC challan, ECR, and contribution registers. You have to check. Okay. The important thing that is happening here is like when you were to register an employee on ESIC portal, अगर आज आप कोई employee join होता है तो generally उसका like I am seeing this practical problem. Okay, sometimes he's not having PAN card, sometimes he's not having Aadhaar card. Okay, and what happens is like his joining date is 22/5. Okay, today he's just joining day, and you know like इन द अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेक्टर्स, लाइक अगर कोई प्रोप्राइटरी फर्म रन कर रहा है या कंपनी रन कर रहा है जिसमें हार्डली 5-6 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, वो एम्प्लॉयज को ऐसे ही हायर कर लेते हैं. कोई ऑनबोर्डिंग प्रोसेस नहीं होता है कि पहले आपका इंडक्शन होगा. 15-20 हजार वाला जो सैलरी क्लास पीपल है, कल से आ जाना इज द थिंग दैट गोज ऑन टू द पेपर. ओके, तो व्हाट हैपेंस इज लाइक फॉर एग्जांपल if a person is joining at 22nd of May, okay, he's supposed to give his all document by today and is supposed to be registered by today only. Now what actually happens is like आप आज register कर सकते हो, yes you can register it. If you were to, how many backdated days you can go officially? You can go 10 days backdated. So for example, he was submitting documents on 1st of June. Okay, you can show his joining date as 22. Okay, now what happens is like he brings document after 1 month. वो 22 जून को आपको डॉक्यूमेंट लाके देता है. एंड व्हाट हैपेंस एट दैट पॉइंट इज लाइक अब उसको 22 जून वी कैन नॉट शो हिज एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 22 May. Why we cannot show? Because portal does not allow to go back more than 10 days. Okay, in that case there is a practical issue. And if we show more than 22, if we add him as 22 May as a joining date, then again it is an issue. We have to pay penalty and interest and all those things. Again an issue. So it is better कि आप you have to check whether any employee who is getting onboarded is getting registered on ESIC and PF portal within 10 days. Okay, so they will get a UIN number. Okay. One important thing I will highlight is like I have seen many organization which has taken registration into ESIC but has not taken registration into PF. There's one organization which has a registration for PF.
There are roughly around 25 plus employees into the organization. They have taken the registration for PF, but they have not taken for ESIC. Starma, ESIC का limit 10 employees से ज़्यादा का है. PF का limit is 20 employees. How the things is possible? Subject to agar every employee for the 25 employees, every employee's salary is more than 21,000 rupees, then he is not liable for ESIC registration. But I'm 100% sure उसमें से एक employee का भी salary, if it is less than 21,000, they have to take the ESIC registration, file the ESIC registration for the same. मतलब ESIC उसका pay करना पड़ेगा. Yes. So that is an important thing. Okay. So if every organization who is having PF number is by default to have a ESIC number, even the portal has given a facility of common unified registration. If you are taking registration for PF, you have to, like, you can take a registration for the ESIC with the same documents that you're submitting for PF. So there's a common unified portal for the same. Okay. Wage definition for PF correctly includes all allowance except notified exclusions. Okay, you can just check over the act what are the notified exclusion. Okay, and again you have to check the salary structure, analyze it properly, and you have to vouch for payroll backups. Okay. Then again, you have to keep in the thing in mind is like ki gratuity. This is the most important thing you have to keep in mind for the gratuity calculations. Okay, there are many organizations which has not even made the provisions of gratuity. Okay, so tell them to make the provision of gratuity. Again, if any whistleblowing has happened, then it would be an issue. Okay, so just make the provisions of gratuity in the books. Okay, as per the accounting standards. So how is the gratuity provisions being made? Okay, 15 days salary divided by 26 into last wages into years of service. Okay, so you have to keep this thing in mind and make the provisions for the gratuity. Okay. So if the organization, it is 50 plus for women, na? Yes. So gratuity paid provided should be 15 divided by 26 into last wages into year of services. Okay. Now going ahead, 50 creche facilities for 50 plus women workers agar hai organization mein. So you have to like take a creche facility. Again, you have to do a registration with the Mahanagar Palika or the like local authority which is there. Okay, you have to arrange photographs and also an inspection log. Okay, these are the documentary evidences you have to keep in mind. Okay. For the unorganized gig workers register on again, this can be like ignored as of now. Okay, you have to like basically for the unorganized gig workers. Okay, there is a e-Shram portal wherein they can check their things. Okay, you can ignore as of now. It's a completely different thing. Okay, now, written OSH policy frame signed by top management and displayed. Okay, so you have to tell the organization that, like, if you are working, okay, like again, employer has to disclose all the occupational safety and health things into that they are complying. Okay, this is safe place, ventilated place, इधर oxygen अच्छा है, ये सारी चीजें उनको देख like एक board बना के display करनी पड़ेगी. Again, there are some formats you have to comply with that formats. Okay. Then safety committee constituted for factories with 500 plus workers. Okay, again there is some safety committee they have to incorporate. Again on the papers they have to create a committee and do all those things. Okay. Now working hours max, again I have showed you ki max kitna working hours hai. It is max 8 working hours you have to keep into the mind. Okay. Again it is for the factory employees only. Leave records. This is not being yet notified by the like it has not been given yet a clarity. Okay, by the code itself. Okay, so as of now I'm considering only for factory wages workers only. Okay, leave records you have to keep in mind. You have to calculate the leave records for the what are the leaves that are being taken by the employees during the year. Okay, so you have to maintain the leave records and all those things in a very proper manner. Subject to every 20 days he has worked, he will be granted one paid leave therein. Okay. If the organization is into the hazardous place like coal mines follow, okay, like explosion mines follow, they have to keep into the mind that there is an annual health examination conducted for the workers in the hazardous process. Yeah. And this is the third like checklist. Okay. Now 25. Again, there's a single registration, as I said, common registration. So you have to check for the validities for the same. Okay. ESIC certifications must be displayed. EPFO allotment letter must be displayed. Okay.
there should be a like up like whenever you go into the labor law compliance now, whenever you visit bank, there is one book, okay, wherein the complaints of the employees, okay, अगर कुछ complaints है तो they have to mention those complaints, they have to maintain the accident register. Banks comply with all those things, okay. So if you want to a detail like how those guys maintain, okay, you can just visit any bank and check these records are being maintained by the banks in a very proper manner, okay. Then the registers, okay, maintained digitally on LDMS portal, okay. There's an LDMS portal for the unorganized laborers that should be maintained in a very proper manner. Okay, accident registers should be maintained, okay. That is like any injury happening, okay, must be reported, okay. There's one register that is called under the ESIC Act. This is under the ESIC Act that you have to maintain an accident register, okay, irrespective, okay. Notice displayed for the minimum wages, working hours. You have to mention all these things, okay. Like if there is any organization, you have to visit therein whether the notice is being displayed for minimum wages. These are the minimum. I know no one खुद के पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा by disclosing the minimum wages, okay. So minimum wages, minimum working hours, holiday list, standing orders, okay. This are never being displayed, but these are to be displayed as per the law. बट खुद के पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा बाय डिस्क्लोजिंग कि हम इतना मिनिमम एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट दिस आर द वेजेस एंड वी आर पेइंग दिस वेजेस. Not possible, practically not possible until unless it's a very big organization. Then employer not liable for default due to contractor non-compliance. Okay. Again, this is something related to the contractual employees. I'm more of covering into the जो basic है, क्योंकि जब construction contractor workers होते हैं, those guys have a separate different rules. Okay, so I'm just focusing on the general provisions of like which are like maternity, okay, payment of wages, bonus act हो गया, ESIC EPF हो गया, क्योंकि ये जो है ये these are the common points. But again, for being detailed into the construction workers, तो उनके लिए तो एक कमेटी बनानी होती है and all those things we have to keep into the mind, okay. मतलब कमेटी बनानी होती है, दे हैव टू सेफ्टी मेजर्स की एक कमेटी बनानी पड़ती है, ओके. देयर आर एन नंबर ऑफ रूल्स, ओके. लाइक roughly around there are 100+ forms they have to fill every year for the safety of the employees. So again, that is for coal mine workers, those things are applicable. Yeah. Yes. Give me a minute, okay. Then then threshold verify establishments. Again, you have to verify timely whether जैसे 500+ वर्कर्स हो गए तो ये एक्ट अप्लीकेबल हो रही है, तो yes you have to like keep into that thing into minds and maintain all those things, okay. जो लास्ट वाली जो चेकलिस्ट है ना, इट इज मोर ऑफ लाइक फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ओके. नाउ अगेन ओल्ड डेफिनेशंस जो है बेसिक प्लस डीए की ये थी लाइक वेज की डेफिनेशन, ओके. बट नाउ इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ अलाउंसेस बट एक्सक्लूड्स ग्रेचुइटी, पीएफ एंड अदर बोनस. इट एक्सक्लूड्स आपका ग्रेचुइटी एंड सम लीव एनकैशमेंट थिंग्स, ओके. देन वर्कर्स का जो ओल्ड डेफिनेशन था वो ये था, नाउ इट हैज बीन एक्सपांडेड टू सम डिफरेंट थिंग, ओके. Not so relevant, but again, floor wage is an important thing which is being fixed by the old central government to fix national floor wage. Okay. Again, these are the penalties if you're not complying. Non-payment of wages is fine up to first offense, repeat offense. These are the penalties you can have an overlook and you can tell to the employer itself like these are the provisions, like these are the things that are happening. Okay, these are the penalties. You can have a look. I will be back in a minute. Okay, give me a minute.
So basically, this can be your reasons wherein you can motivate the clients to tell that कि आप ये comply करो ना, and then it would be causing you these things. Okay. So 99% जो miscompliances आते हैं, that is from the this first page only. Okay. 99% compliances comes from this page. Okay. And the major compliances that are happening are due to practical difficulties. मेजर compliances जिसमें अभी एक दो अपन थोड़ा Q&A और मैं थोड़ा practical visions देता हूँ कि क्या actual problem होता है. Okay. So for example, there's a one construction contractor. I'm dealing a case law, so that's why I'm able to explain you in a very proper manner. एक case law चल रहा है. एक local contractor मतलब एक builder था. एक builder ने घर बनाया, मतलब flat scheme बनाई. ठीक है. अब फ्लैट स्कीम बनाने के लिए उसने लाइक कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया था. ठीक है. जस्ट फॉर एग्जांपल, लेबर के कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि तू 100 एम्प्लॉयज लेके आना और 100 एम्प्लॉयज लेके आके तू ये दिन ये काम करवा लेना. अब इमेजिन करो, ये 100 एम्प्लॉयज जो है, जो आने वाले हैं, वर्कर्स आने वाले हैं, वो एक बिल्डिंग पे वर्क करने वाले हैं. इनका सबसे पहले ESIC रजिस्ट्रेशन हो, PF रजिस्ट्रेशन हो. हाउ इट इज पॉसिबल? ये आज एक साइट पे वर्क करेंगे, कल दूसरे साइट पे वर्क करोगे. कैसे पॉसिबल होएगा ये चीज? इट इज नॉट पॉसिबल. अभी हम वो ऑफिसर्स को बोल रहे हैं, सर आप बताओ कैसे पॉसिबल है. उनके पास पैन कार्ड नहीं होता, उनके पास आधार कार्ड नहीं होता है. इट हैज टू बी लिंक्ड. आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक्ड होता है. इनको रजिस्टर करने के लिए पीएफ के वेबसाइट पे उनका पूरा फॉर्म भरना होता है. पैन कार्ड कौन है, पैन कार्ड क्या है, आधार कार्ड क्या है, मेल एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है. मेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आर स्टिल बिकमिंग कॉमन बिकॉज एवरीवन इज हैविंग फोन. ओके. बट स्टिल पीपल आर नॉट हैविंग देयर पैन कार्ड्स. एंड पैन कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. पीएफ का अकाउंट बनाने के लिए, यूएन बनाने के लिए पैन कार्ड इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट. देन नॉमिनीज. ओके. इतना डेटा, दिस इज वन 2-pager form which we have to take from them before getting enrolled on to the payroll. Okay. Or for any work. And practical difficulty क्या हुई कि like he was like he told कि I have made the payment to the construction contractors. उसने कभी सैलरी लिखा ही नहीं उस केस में. He has never mentioned a word salary into his books of accounts. He told that payment made to contractor. Payment made to contractor 7 crore for one site. Legit figures बता रहा हूँ, 7 crore का उसने पेमेंट किया था साइट फॉर दी साइट फॉर एन 1 year. ओके. 7 crores का पेमेंट he made for 1 year for the construction contract workers. Okay. He deducted the TDS. Everything was super. Everything was done in a very proper manner. Now they went to construction contractors. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के उन्होंने नाम लिए, लेबर लॉ वालों ने, ESIC वालों ने, PF वालों ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम लिए. वो बोले कि यार ये पूरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट हुआ है. ठीक है. नाउ दिस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स वेर द आई ऑफ द ESIC and PF. They went to those construction contractors workers, okay, and those guys were asked whether you have taken the registration for PF and ESIC before enrolling the workers. उन्होंने बोल दिया हमने तो लिया ही नहीं है. Now who will be penalized? जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो भी ठेकेदार जिनको बोलते हैं, those ठेकेदार्स are basically uneducated people who bring people from various cities, various towns and various locations for doing the work in the city. Now imagine how that is possible. Now the practical difficulty is like, okay, it is not possible. मेरे लिए possible ही नहीं है. अगर मैं कोई बड़ा construction कर रहा हूँ which is 50 floor rate of construction, 200 plus flats, मैं कैसे verify करूँ कि कौन सा worker आ रहा है, कौन सा worker नहीं आ रहा है? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है. ये सही सी पीएफ में कितनी दिक्कत हो जाएगी. वेस्ट रजिस्टर मेंटेन करते करते मेरा पागल हो जाऊंगा अगर मैं वो चीज करने लग जाऊंगा. दिस इज अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज लाइक देयर इज अ प्रोविजन इनटू द एक्ट कि अगर ESIC और PF अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डिडक्ट नहीं करता, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, दैट इज द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स आर नॉट डिडक्टिंग, देन इट विल बी द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिन्होंने वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को असाइन किया था. नाउ द लायबिलिटी हैज केम ऑन टू द हेड ऑफ द बिल्डर के हेड पे आ गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड वी आर फाइटिंग फॉर हाउ इट इज पॉसिबल. आप बताओ, आज पे भी कर दे तो द गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर पेमेंट ऑफ दोज ड्यूज. ओके. कहाँ से ट्रेस करके लाऊं उनका PF भरने के लिए? मैं उनको कहाँ से लाऊं? पता ही नहीं कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं. डेली बेसिस पे आते हैं, 400 रुपए लेके जाते हैं दिन का. एंड आई डोंट नो हाउ टू ट्रैक दोज थिंग्स. So this is the practical difficulty. Okay. So whenever you see, government is very safe. Okay. Whenever there is a construction contract, contractors are assigned ना, they ask for ESIC and PF registration. मेरे पास दिन के 3 लोग आते हैं, बोलते सर हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का टेंडर भर रहे हैं, वहां पे ESIC और PF नंबर डालना मैंडेटरी. गवर्नमेंट प्लेज वेरी सेफ. दे पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कॉन्ट्रैक्टर्स ओनली.
for any construction. So for example, if कोई road बनाना है, तो road बनाने के लिए there is an important criteria. The contractor must be registered into ESIC and PF for applying to the bid of constructing a road. So these are the things which are creating an issue. Okay, practical difficulty. They must like implement some other things. Okay, उनको बोलो कि यार 5 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन make some different rules for this. Okay, until unless those the government will not make this practical difficulties possible. Okay, it is not possible to implement this law in a very proper manner. This is the major practical difficulty which comes into the picture. Okay, now we'll answer some questions. Okay, I will keep it very short. मैं आंसर्स क्वेश्चंस ओपन कर लेता हूँ. Give me a minute. First question is bonus act applicable to charitable trust? Yes, applicable to the organizations having 10 or more employees, irrespective. Even Tata Charitable Trust, Tata का जो trust है, I have been the like ठीक है, Tata जो charitable trust है, even those are guys are liable for the bonus act. Okay, they have to be paid bonus. Okay, then Form 11 is basically a declaration taken by the employer with employee कि हमारा PF मत डिडक्ट करो. Okay, this labor code ऐसा कुछ major change नहीं हुआ है. Okay, labor codes are being implemented from 21st November, but I don't know when those guys will become serious with this act. अगर ये लोग ये serious बन जाते हैं ये act के लिए, again it will be a major contribution to the economy. Okay, अगर ये acts की penalties और ये applicable हो जाती है तो. You can check, okay, the minimum wages का जो चीज है ना, you can check it from the online portal itself. Okay, you can check it. Section 6 है जहाँ पे minimum wages होता है. Yes, वो तो explain कर दिया था मैंने. See, gratuity calculations have remained same, okay, but what has changed is like, okay, previously what used to happen is like, okay, जो गिग वर्कर्स कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव बीन अपॉइंटेड टू लाइक मैं सैलरीड बेसिस पे कहीं अपॉइंट हुआ हूँ फॉर कोई एग्रीमेंट, जैसे 2 साल के लिए मुझे कोई एग्रीमेंट लाइक कोई वर्क मिला है ऑन सैलरी बेसिस. ओके, और 2 साल के बाद वो वर्क खत्म हो जाएगा, पर 2 साल के लिए मैं उनके वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सैलरी पे रहूंगा. ओके, सो अगेन इट इज वेल कि लाइक आई वाज सपोज्ड आई कैन वर्क फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स. ओके, बट वो एग्री मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही 2 साल का है ना. सिंपल वन एग्जांपल. ओके, सो आई गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वो रोड. ओके, फॉर विच मैंने एक इंजीनियर को हायर किया जिसका सैलरी था 50,000 रुपए पर मंथ. ओके, एंड आई टोल्ड हिम द कंस्ट्रक्शन वर्क जब तक है तब तक आपको मेरे साथ वर्क करना है. आफ्टर द कंस्ट्रक्शन वर्क इज ओवर, ओके, you are free to go anywhere you want. Okay, he, if I were to, okay, he would have continued. अगर मेरा रास्ता 10 साल लग जाता था बनने के लिए, वो मेरे साथ 10 साल काम करता था. Okay, in that case he will be liable for gratuity, but due to my employment is due to like छोटे टर्म का है, ड्यू टू सम ऑब्लिगेशन है, तो व्हाट हैज हैपेंड इज लाइक इन दिस केस कि आई विल बी ओनली लायबल फॉर द ग्रेचुटी ओनली इफ आई वर्क फॉर मोर देन 1 year. ओके, सो इन दिस कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स जहाँ पे आ जाते हैं सैलरी वाले का, दे आर सपोज टू गेट द ग्रेचुटी इवन आफ्टर 1 year इन दैट केस. Is there any tools available for AI or automation of labor compliances? You can check over the internet, but again, okay, it's a subject matter. मतलब आपको इतनी सारी details punch करनी पड़ेगी. We are into the process of making such tools कि ये चीज है, ये चीज है. But again, there are very big shot players. You can check with Grey HR. Okay, Grey HR is a website wherein you can get all those things. Okay, I've been like personally knowing those guys, and I have been working in the framing of
the provisions and all those things with those guys. Okay, so you can try collaborating or you can try using their services. They are into like making such things. Okay, you just take आपको वो एक form देते हैं, form पे you have to just check. Okay, this is not for a marketing purpose, just I you ask for the name. Okay, I'm just suggesting the name. Okay. Yes, principal employer will be liable for non-compliance of the contractor workers for paying PF and ESIC. Yes, principal employer. See, PT is different, okay? PT जो होता है ना, PT ये different चीज है. और आप अगर देखोगे, it is a state law, depends upon every state, okay? It is not forming part of the new labor code. पीटी एंड पॉश एक्ट, ये दो चीजें हैं. पीओएसएच इज बेसिकली, ये दो और एक्ट हम कंप्लाई करते हैं. मैं इसका थोड़ा एक ब्रीफ देता हूँ, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू लेबर कोड. ओके, POSH and like PT is the thing which is again a state matter. POSH is basically prevention of sexual harassment at the workplace. Okay, for which every organization with specified limits of employees with specified turnover has to comply with POSH Act, and they have to maintain a committee. Okay, wherein the if there is any incident or accident happening into the organization, those need to be reported to the local authority. Like local authority in the case पुलिस स्टेशन बोलो या फिर लाइक कोई भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फॉर दैट स्टेट यू हैव टू रिपोर्ट दैट थिंग. अगेन इट्स अ स्टेट लॉ, सो इट इज नॉट पॉश एंड पीटी एक्ट इज नॉट कवर्ड हियर. ओके, सो पॉश इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्ट. ओके, वेर इन वहां पे एक फॉर्म भी ईयरली फिल करना होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा केस ड्यूरिंग द ईयर रिपोर्ट नहीं होना चाहिए. ओके, यस, फुल एंड फाइनेंस सेटलमेंट विद इन 2 days फॉर दी व्हाइट कॉलर जॉब्स ऑल्सो, उनको भी अप्लीकेबल है. Yes, mandatory provisions say if anyone who has worked for more than 30 days will be liable for the bonus during an accounting year. Yes, I will share the checklist. Yes, gratuity provisions are all same, okay, but only addition has been made to the gig workers, okay, जो एक contractual एक obligation के लिए जो employee होते हैं, like for example as I said, मुझे रास्ता बनाना था, एक इंजीनियर हायर किया जिसका सैलरी 50,000 रुपए, जब तक रोड बनेगा तब तक वो मेरा एम्प्लॉई. इन दैट केस गिग और लाइक टेम्पररी एम्प्लॉइज जो होते हैं, इन दैट केस gratuity has now become applicable. यस, पीएफ डिडक्शन का लिमिट है, आप 60 इयर्स तक डिडक्ट कर सकते हो. अगेन एन इंपॉर्टेंट टाइम पॉइंट आई फॉरगॉट टू टेल इज लाइक आप 60 इयर्स के ऊपर को रख भी नहीं सकते हो वर्किंग के लिए until unless it's a consent of the employee therein. Okay, I'll explain these things. Okay. Yes, I have told ना कि वो PF is like bonus will be applicable to trust also. Yes, I will share the PPT. Not for profit entities के लिए, I'm not getting the question. You have simply asked कि not for profit entities will also have to comply. You are talking about bonus? Yes. Bonus have to be complied for all those. See, it comes to the natural law, okay? Natural law में वो covered होता है. I know many organization has not completed. You can take a benefit of helping them to comply with all those things. Okay, there are roughly around like if you were to do okay, if you मतलब अगर आप practice में enter करना चाहते हो for the new CAs who are into the practice, okay, I would suggest this can be an amazing entry point for those guys who want to give the guidance over the labor law. इतना स्कोप है प्रैक्टिस में, मार्क माय वर्ड्स. ओके, बट अगेन आई शुड नॉट बी टॉकिंग दिस. ओके, बट अगेन यू कैन प्रोवाइड दिस एज अ मेन सर्विस. ओके, जितना वर्क आपको ऑडिट, इनकम टैक्स और जीएसटी में नहीं मिलेगा, उतना वर्क इधर आपको मिल जाएगा इफ यू नो द प्रोविजंस वेरी वेल. फीस नहीं बता सकता हूँ, सॉरी.
अब सैलरी साइकिल 25th या 24th को चालू हो रहा है आपका, सो यू हैव टू बी वेरी सिंपल, ओके। सो सी इफ देयर इज अ विसल ब्लोइंग हैपनिंग, आपका सैलरी डेट ही 25th को है, ओके। आई सेड कि यू हैव टू गिव द सैलरी विद इन, फॉर एग्जांपल योर सैलरी इज हैपनिंग ऑन 25th ऑफ एवरी मंथ, ओके। सो यू हैव टू गिव इट ऑन दी 7th डे, दैट इज लाइक आप अगले महीने की सेकंड डेट तक जो दे दो, वहां से 7 days काउंट करके दे दो। अगेन यू कैन डू दिस थिंग, ओके। अगर 25th ही आपका वेज पीरियड है, पॉसिबल है ना, 25th वेज पीरियड है, तो 25th टू 25th, ओके। सो इट शुड नॉट एक्सटेंड मोर देन 1 month एंड यू हैव टू पे आफ्टर द मंथ इज एंड, 7 days के अंदर पे करना है, सिंपल। सो इट इज नॉट एन इशू, ठीक है ना। लेकिन अगेन यू हैव टू कंप्लाई, जो भी आपका सैलरी डे रहेगा उसके 7 days में आपको पे करना है, सिंपल। सैलरी डे मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो लाइक यू हैव डिटरमाइंड कि 24th इज द डे वेन वी विल रिलीज द सैलरी स्लिप। पहले सैलरी स्लिप्स इशू होती है और उसके बाद सैलरी आता है, ठीक है। तो सैलरी स्लिप्स इशू होने के बाद 7 दिन के अंदर आपको पे करना है। अब सैलरी स्लिप कोई मंथ का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज द मंथ ऑफ मार्च, ओके, एंड यू आर फॉलोइंग द मंथली बेसिस, तो मार्च का सैलरी स्लिप कब तक इशू हो जाना चाहिए, मार्च का सैलरी स्लिप आपका इशू हो जाना चाहिए बेसिकली मार्च के एंड तक इशू हो जाना चाहिए, और 7 days के अंदर आपको उसको पे करना है, सिंपल, ओके। एंड फिर सैलरी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, आप 24th को कर रहे हो तो उसमें ऐड कर लो 7 days। तो 24th का आपका वेज पीरियड है, तो यू हैव टू पे इट बाय दी 7th डे। 24th के बाद 7 दिन ऐड कर लो, सिंपल। इक्वल वेजेस फॉर मेल फीमेल, यस, इवन फॉर ट्रांसजेंडर्स सेम रहेगा। Many companies have stopped paying leave encashment. Again, a whistleblowing happening. See, ये लॉ में अब लीव एनकैशमेंट पे करना है, ये कहीं रिपोर्ट ही नहीं करना है। तो अगेन until unless there is a whistleblowing happening into the company, okay, these things will not come into the picture. Whistleblowing अगर कोई करता है then it will become a issue. Otherwise it's not an issue. आप बोनस भी मत दो, not an issue. But again, if someone do a whistleblowing, then you have to pay to the entire people. Yes, CA फॉर्म्स को भी PF ESIC कंप्लाई करना मैंडेटरी है, subject to if the employees are more than 10 for the ESIC, and for PF it is 20. PF will be applicable. PF में there is nowhere written कि PF will be applicable for mandate salaries or not, okay? मैं जो केस लॉ बोल रहा हूँ, हम उसमें झगड़ झगड़ के परेशान हो चुके हैं। अब हम अभी उसके लिए हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि यार ये कैसा लॉ है, ठीक है। yes. शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन इट्स लोकल लेजिस्लेशन, लोकल लॉ में आता है वो, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीएफ, लाइक लेबर लॉ का पार्ट नहीं है। ईपीएफ और ईपीएस का एग्जांपल देता हूँ। इफ योर सैलरी इज अप टू 15,000 रुपीज, ओके, then you are mandatorily required to contribute 8.33% to the EPS, that is employee pension scheme. Okay, so 12% is the employee contribution, 12% is the employer contribution. 12% of the employer contributions may say 8.33 should be going to the EPS, and remaining 3.6667 should be going towards the PF, and employee ka contribution towards entire should go towards the PF only. Okay, yes. Yes, you can give bonus. Like yes, जो statutory limit है, what if someone is asking कि हम 20% से ज़्यादा bonus दे सकते हैं क्या? Yes, you can give any number of bonus, okay. But 8.33 to 20% is being prescribed. आप ज़्यादा देते हो तो कोई issue नहीं. This is the generally ये range रखते हैं. लेकिन if you're giving more than that, again you are violating the basic salary का, वो basic salary का formula भी याद रखना है आपको। आपकी टोटल बेसिक सैलरी का 50% से ज्यादा हो गया तो फिर वापस आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका बेसिक वेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। बोनस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक वेज, ओके। सो बेसिक प्लस जीए प्लस अदर अलाउंसेस मस्ट बी 50% एंड अदर अलाउंसेस मस्ट बी 15%, ओके। सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। Yes, it's a responsibility. There is a specific clause into the statutory and tax audit reports wherein you have to mention the labor code compliances. Sawpack का you can check with the local state laws, okay? जो भी like you have to check with महानगर पालिका और the ग्राम पंचायत you have to check with.
आपको कोई बुक सजेस्ट करना है तो आई वुड सजेस्ट यू कैन गो फॉर टैक्समैन का न्यू लेबर कोड विथ न्यू ड्राफ्ट रूल्स. ओके, आई वुड सजेस्ट कि लाइक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. आई वुड एंड इट हियर. ओके, and if you guys have any query, okay, you can mail it to me. Okay, I'm more than happy to guide you. Okay, yep, I know time was very short. I need to rush for certain points. I am not able to, like, I know it is not possible to give the entire clarity in this short period of time. But again, ESIC, PF, and major acts I have covered. Okay, hope you have loved it. Okay, yes, checklist and all these things I will be sharing it. PPT I will be sharing it with you. So thank you so much, Pranay, for a wonderful session. Yeah, And indeed, we can see the numbers also. So everyone was very keen to learn and upskill themselves with this new labor code and the yeah. importance of it to all the organizations. So with this, may I request Treasurer CA Rakesh Shah to propose a well-deserved vote of thanks. And yes, the recording will be uploaded of this session will be uploaded on YouTube channel of WIRC, and PPT will be shared on WIRC website with the permission of the speaker. So as he has consented, Pranay has said yes, and we will be uploading it soon. So with this, Rakesh bhai, may I request you to propose a well-deserved vote of thanks? So on behalf of WIRC, I extend deepest gratitude to our today's learned speaker, and looking forward for your such active participation in coming Friday. We are having risk-based audit as per RBI guidelines. So looking forward. So that will be our second session, and 9 more to go. With this, thank you for your wonderful session, Pranay, and your valuable insights. Welcome, Thank you. welcome, welcome. Yes, welcome. Bye bye.